Are we ready? Are we ready यार जनता भाई पूरा सीजन हो गया. The last day of the season is going to come. Or yes, there has been a lot of talking points over the course of the week. वो तो है ही. But भाई when we all do football content, at least me, I'm sure, and all of you आप consume भी करते हो. Let's be real about it. चैंपियंस लीग नाइट्स और चैंपियंस नॉकआउट से बेटर शायद ही कोई होगा. और भाई यूसीएल नाइट फाइनल है तो भाई वील हैव होपफुली एवरीवन कमिंग इन. Or for this special night, obviously not just an Inter Milan fan, but my favorite panel in the house, Fateh is back in the house. Fateh, first of all, कैसे हो भाई? I'm good and raring to go. Like can't wait for the Champions League final. Like 48 hours, I think, left, but let's go. Oh yes, less than 48 hours यार. तो भाई सब लोग आ जाइए, सब लोग Yeah. जल्दी जल्दी. Let's get to talk about 48. Well, let's get to over 48 likes quickly on the stream as well as मैंने community में share किया. So hopefully we'll have everyone coming on. भाई आप लोग सब सोचे होंगे यार, it's a UCL final. Yes, it's excitement for sure. But एक सेकंड मैं मेरा for whatever reason एक सेकंड दीजिए मुझे. Okay. Guys, is it my internet or is it Fateh's internet? Do let me know. Okay, I think it's Fateh's internet, right? People in the chat do help me out here. I think it was probably Fateh's internet, but Fateh is going to join in just a second. होता है कभी कभी, you all know that. But हाँ, तो मैं यहाँ पर बोल रहा था, although it's Man City versus Inter Milan, Man City obviously chasing that treble. Inter Milan भी remember kind of a treble chase कर रही है. They have technically won 2 cups इस साल, but although on paper it looks like a one-sided match, UCL finals भाई काफी अच्छे finals हुए. We'll be talking about that. But obviously with Fateh and Ultra being here and myself also would like to claim that by 99 say na Champions League finals dekh rahe at least every final. So bhai we will be talking about something like a combined 11 of all those finals, and of course team of the season hum baat karenge about what has been the best in Europe this season. So bhai sab log again let's hit that like button. A lot of interesting conversations apart from tactics transfers to hoti hone wale by default. Lekin Fateh is back. So bhai I'll give a quick shout out to everyone joining us. Omar Trollface, yes, I saw that. Absolutely, no problem. Nice to see you, bro. Nice to see you. Omar Trollface तो बोल रहे हैं, as a Chelsea fan, UCL 2012 final was the best. I can't forget Drogba. Let's go City. Yes, City fans हो गए. भाई अभिनव का birthday यार. सब लोग भाई happy birthday हो जाए in the comments. भाई सब लोग let's spam the comments with happy birthday Abhinav. Abhinav has been one of the supporters of the channel always. Yes, I know Messi ruining the birthday वो तो आपको लगेगा because you're a Messi fan Abhinav. लेकिन let's be real, I think he's given to football enough, and the fact is that even we are talking about him being close to his prime right now is great. But happy birthday to Abhinav, absolutely. और कौन है भाई? Ajinkya in the house. Yes, कर दिया भाई. Deepank in the house as well. Sanjeev, of course, another killer in the house. Manav, of course, great to see City fans in the house. मैं देख रहा हूँ काफी City fans भी जुड़ गए. Manav, big up as always. Yes, you're very close to that, Manav. Anurag, of course, big up to Anurag, big up to Sport Freak. उनका channel जो है. Messi is good. Thank you, Leo Messi, for everything. भाई अभी भी I think people have not gotten over that. 8744 Manchester City fan. विश्वास, Sport Freak, Ranjoy Sen, भाई सब लोग, सुशांत, गौरव. तो भाई मैं यहाँ पर while I go over the rest of the comments, फतेह, first things first. भाई मैंने एक पोल भी डाला है, generally speaking, that which was the best Champions League final ever for you. You have watched a Champions League from late 90s, ठीक है? Generally speaking, और ये एक बात बता दे, not just as an Inter fan, but as a Champions League fan, why do you think, मतलब certain nights you remember that because of which Champions League final has to be that, you know, that next level? मतलब be it the quality of football, be it basically the closeness of the tie, surprise, कौन सा एक फाइनल जो आपको हमेशा मतलब ओवर द अदर्स लाइक याद आता है? मतलब आई थिंक 90% जनता बोलेगी probably Istanbul, and that's why we are probably talking about this. But apart from Istanbul, which is obvious, एक जो फाइनल मतलब वो which do you really you know cherish as a neutral for once? I think one final that I really enjoyed was Bayern Munich Valencia 2001. That went to penalties. It was the Oliver Kahn where he saved that big penalty, but that final was so close, Ankit, and the tension that you felt, because both the teams they were so good defensively. The coaches at that stage, Ottmar Hitzfeld, who had already won the tournament with Borussia Dortmund, who had 2 years ago lost the final to Manchester United at Camp Nou, those two late goals, Solskjaer and Sheringham. So, he had lost the final. Hector Cooper, the Valencia coach,
Mm-hmm. final, and I think that final isn't talked about. I mean, there were missed penalties, there was extra time, there were fantastic saves, and the penalty shootout also went into sudden death. So that's a final that I think if people get the chance to watch again, they definitely should. वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। भाई सब लोग चैट में आप लोग भी अपना बताइए। अगेन अगर आप लोग ऑलरेडी पोल में ले लिए वन ऑफ द ऑप्शंस, इन फेयर इनफ इफ इट्स अपार्ट फ्रॉम द थ्री ऑप्शंस गिवन, प्लीज प्लीज कमेंट, मैं लेने वाला हूं आपका फॉर श्योर। एंड यस भाई, सब लोग विस्का सिटी भाई, प्रेयर्स टू द ब्लूज भाई, एवरीवन इज रेडी फॉर इट, लुक्स लाइक इट। Yes, 2008, as much as it was sad, quality of football and the intensity of the match was really top notch. Again, people, as much as I love a Didier Drogba, यहाँ पर I think Umar बोल रहे थे about Didier Drogba as well, right, earlier. People do not talk about it. Why Drogba got a red card in the extra time, and that's something that people don't talk about it much, and people forget. Istanbul was magic. It was my first time watching a final, and what a final it was. Yeah, it would have been Chelsea though, as yeah, as in 2009 semi-final. Agar by chance वो नहीं होता, then maybe 2009 final would have been the next level. Absolutely. Okay, by Samar, I'm not sure who are we talking about. Do let me know whom are we talking about in the comments. कोई और स्ट्रीम का कमेंट याद डाल रहे हो क्या आप? बट कोई नहीं भाई। लेकिन अगेन मैन सिटी क्रेजी क्रेजी मतलब फॉर्म रहा है मैन सिटी का इन द लास्ट से फ्यू मंथ्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑलरेडी प्रीमियर लीग चैंपियंस, एफए कप as well. FA Cup is something that kahin na kahin, wasn't kind of much under Guardiola. FA Cup bhi jeet gaye and going for that big European treble that they're going, right? As in again, very few coaches have done that. सब लोगों को पता है भाई. In fact, बहुत few coaches have actually done that with two different clubs, and that is what the point is. लेकिन आप लोगों को याद है तो भाई इंटर मिलान, obviously, aiming the 11th European Cup final. If I'm not wrong, they are in the 11th European Cup final. And in terms of Champions League, भाई we all know that 2010 का हम भूल नहीं सकते, लेकिन they have won two, in the previous format of Champions League, दो और European Cup, 64 65 if I remember right. So टेक्निकली देखा जाए तो मतलब मॉडर्न एरा में फतेह, दिस हैज टू बी लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर इंटर मिलान इन द लास्ट 13 years फॉर श्योर। बट एट द सेम टाइम आपको याद है तो 2010 में जो जीते थे ना, इट वाज सैंडविच बिटवीन पेप ग्वार्डियोलास 2009 एंड पेप ग्वार्डियोलास 2011 बारसा विनिंग Yeah, साइड्स। yeah. तो गोइंग इनटू दिस मैच, मतलब आप कितना परसेंटेज दे रहे हो टू योर ओन टीम इंटर मिलान? See, I think it's a one-off game, Ankit. Like as much as obviously City are the overwhelming favorites. If I was a neutral, I would have said, okay, City probably have a 75% chance of winning. But it's one of those one-off games, David versus Goliath. So I'm happy just giving ourselves a 25% chance as well. I mean, I would Okay. rather be the underdog than be the team that's expected to take all the pressure onto themselves. So I think that's City. They have all the pressure on themselves. Okay, And they Fateh, एक also second. If I can just stop you, by everyone in the chat, mods, members, do help us out here. Sometimes, at least for me, it's seeming. Is Fateh lagging? It seems like Fateh is lagging to me. If someone in the chat can please confirm that, please. Please confirm if Fateh or मैं कोई lag कर रहे हैं video. Do let us know. And generally, also, if someone lags, I would request the mods or the subscribers generally to please, prompt me there, right there. Please, if someone can confirm, Fateh, पता नहीं, please continue. But yeah, sorry to cut you. yeah, I think my internet is choppy. Like something is off. Like the whole Okay, day okay, it's no been problem. like this. हाँ, Yeah. होता है, So, चलो कोई नहीं। but do let me know. I'll change the room if अगर कुछ होता है, अगर ज़्यादा होता है तो do let me know. So yeah, I mean I think we are not the favorites, Ankit, but I'd rather go into this game as the underdog because taking that tag of favorites, considering how young are some of the players in our team are. I think this is it serves us, that the whole world is talking about Man City. I think it serves us perfectly. And what it reminds me of is the Borussia Dortmund versus Juventus final, because just the way City are overwhelming favorites in 1997, everybody was talking about how it was Juventus's final to win. It was their third consecutive. It was the second final consecutively. Just like City, I think they were 2 years ago. Am I still lagging? यस यस, एटलीस्ट योर बीच में अटक रहा है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट फॉर मी, बट लोग बोल रहे यू आर फाइन, सो आई थिंक वील गो विद दैट। मतलब अनलेस इट्स वेरी बैड, यू कैन शिफ्ट। आई थिंक फॉर नाउ इट्स ओके, बट आई होप Yeah. एवरीवन इज So ओके।
Yeah, so it's like, when we talk about Champions League finals, if you, and I know that you've seen the goals, the 1997 Dortmund Juventus game, Juve were overwhelming favorites, Ankit. People were saying 95% it's done for Juventus, and in the end, Dortmund on that day just stepped up. So I think it's just about us stepping up day after tomorrow and getting it done. अजिंक्य तो बोल रहे भाई द वर्स्ट यूसीएल फाइनल आई हैव सीन वाज द 2017 लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड गेम कैरियस मिस्टेक रूइंड अ वेरी फॉर्मिडेबल कॉन्टेस्ट टॉक अबाउट मिस्टेक्स यार कहीं ना कहीं आई थिंक आर्सेनल वुड रिमेंबर एज वेल एंड विल कम टू दैट फॉर श्योर आई हैव अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप भाई सब लोग बिलीव इन इटालियन डिफेंस अभिषेक बोल रहे भाई टू बी ऑनेस्ट और यहाँ पर एक अच्छा एक मुझे एक मौका दिया है बोलने को और भाई सब लोग बीच में मैं एक थोड़ा क्वेश्चन थ्रो करूंगा एंड अगेन इट्स फॉर फतेह एज वेल एज द चैट तो आप लोग भी मजे करेंगे एंड यू विल गेट टू नो समथिंग एट द सेम टाइम यू कैन have some fun in answering the question. तो भाई इटालियन डिफेंस की बात हो रही है एंड दिस इज अ फैक्ट दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओनाना हैज डेफिनेटली आई थिंक reached up that level where he's showing that okay he is surely the number one man जो पता ही था that's why he was signed for but वो ये initially remember he was coming out of a ban so there were some question marks about his attitude लेकिन उसने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है as a goalkeeper and if I'm not wrong मतलब you have got so many clean sheets with Onana this time इस चैंपियंस लीग कैंपेन में अगर फाइनल में बाई चांस इंटर रख लेती है क्लीन शीट जो अभी बहुत कम चांसेस है वी नो दैट बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जैसे फतेह ने समझाया क्यों तो अगर वो हो जाता है तो what record will he equal and whose record will he equal Fateh and everyone in the chat do let me know I'll give a chance to chat first chat everyone भाई ओनाना अगर क्लीन शीट रख लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड ओनाना इक्वल करेंगे इन चैंपियंस लीग और किसका रिकॉर्ड इक्वल करेंगे डू लेट मी नो इन द चैट एवरीवन इफ एनीवन रिमेंबर्स व्हाइल चैट आंसर्स दैट क्वेश्चन मैं लेट्स मूव ऑन विद द कन्वर्सेशन तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोड टू द फाइनल भी दिखा लेता हूँ एंड मे बी आपको कुछ याद आ जाए उससे भाई देखिए क्लियरली मैन सिटी हैव डोमिनेटेड द सीजन ठीक है बीट द चैंपियंस लीग और बीट कोई भी टूर्नामेंट प्रीमियर लीग एफए कप दे हैव डोमिनेटेड लेकिन आपको याद है तो भाई अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड वेरी सरप्राइजिंगली इट वाज हालैंड जिसने मारा था गोल एंड दैट काइंड ऑफ गॉट देम गोइंग कोपेनहेगन के साथ दे वर 10 men डाउन इन द ग्रुप स्टेज बट स्टिल दे गॉट द ड्रॉ सो कहीं ना कहीं दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजल्ट्स फॉर देम टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द ग्रुप एंड दैट इज वेयर ऑब्वियसली दे गॉट लाइप्सिग का फर्स्ट लेग बहुत अच्छा था कौन बाय लाइप्सिग एज वेल सेकंड लेग में भाई हालैंड ने दिखा दिया व्हाट इज हालैंड साइंड फॉर एंड देन ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख मतलब getting 8-1 4-1 and then Real Madrid 5-1 finally show that they are the big guns are they ready और इंटर मिलान पर आएंगे लेकिन फतेह if you have to tell about your opponents Man City मतलब that knockout run जो है in itself is I think scary enough but what has changed in City apart from the Haaland factor this season according to you What has been? what has changed in City apart from the Haaland factor this season में क्या अलग लगा है because knockouts में अलग ही even the Etihad was rocking bro against Real Madrid I have to be honest I think that they have belief, that they've been so close that just that one step was missing. And last year also, I think they were almost there. Like when I was watching that Real Madrid game, Ankit, I felt like okay, City have done it. City lost the final last year to Chelsea, and they're going to make the final again. And I could not have imagined that Real Madrid would have made that comeback. So I think City this time they have that belief. Okay, they've made a final, they lost a semi-final, and they believe that okay, now we are going to be there. And remember, I talked about Bayern Munich versus Valencia, Ankit. It was the same that happened to that Bayern Munich team. In '99, they lost a final. In 2000, they lost a semi-final to the eventual winners Real Madrid. And in 2001, they came back and beat Valencia and won the Champions League final. And what they had was that belief, that we've been so close. So I think along with Haaland, City now have that belief that look, we can do it, and they've already beaten the champions. Real Madrid. A lot of us were talking about how Real Madrid, 14-time winners and all that. So the fact that you beat such a big team, that gives you that added belief that okay, this is going to be our time. So I think City have that now, that sort of momentum this year. So they have a lot of belief and they have Haaland. ओके फतेह मेरे लिए तो आप अभी भी ये थोड़ा थोड़ा लैग कर रहे हो यार बीच में आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन चेंज दैट बाय एनी चांस मे बी एक काम करिए ना मे बी यू माइट वांट टू गो आउट एंड कम बैक अगेन समटाइम्स इट हैपेंस let me come back in with my mobile. Yeah, whatever suits you. I think whichever is better. आ जाइए भाई. फतेह is joining in a minute, guys. भाई सब लोग भाई देखिए जो भी लोग जुड़े हैं ना लाइव डिस्कशन है
Hopefully we'll have everyone joining, everyone participate in the chat. For people asking कोई और आने वाला है, देखिए यार ये सोच हमें बदलना है. Love to the community, love to everyone bro. मगर आप लोगों को लगता है पूरे देश में, पूरे एशिया में, पूरे दुनिया में भाई वो 7-8 लोग ही जो बात कर सकते हैं फुटबॉल के बारे में, इट इज सो अनट्रू ब्रो. फतेह इज द बिगेस्ट, द बेस्ट एंड द बेस्ट of the panel that we can have. Trust me on that. Big up to Fateh, yaar. Fateh OP, everyone in chat. For people who know Fateh's knowledge, who knows Fateh's passion and why he's an Inter fan, bhai, let's have Fateh OP in the chat. Bhai, Fateh, people should be knowing him more. Just not about it. It's a football fan. तो आप लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो ये आने वाला है वो आने वाला है? एक दो कमेंट्स मैंने देखे तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस. ये सोच भाई अपने को बदलना है. अ फैन इज अ फैन, डजंट मैटर हु ही इज. ठीक है, so let's not do that. But so hopefully we'll have everyone hit that like button as well as like on the community post. ये एक like target दिख रहा है आप लोगों को? जितने ज्यादा likes आएंगे उतने ज्यादा लोग होंगे. This is the UCL final we are talking about. Yes, absolutely. आप लोग देखना चाहते हो celebrity guest? I had called, but celebrity guest अगर available नहीं है तो भाई हम भी कुछ तो जानते हैं भाई. घंटा गैंग, come on, you know the facts. Me and Fateh both, yeah, let's be real about it. As much as we are passionate and we want to talk current, absolutely, but the fact is UCL finals हमने just about मिलाकर 50 finals देखे यार live, to be very honest. That's how I'm saying. But anyway, यहाँ पर देखते हैं Diaz back from injury in Feb has been massive. Absolutely good point by Aryan. और यहाँ पर talking about City ना, फुटबॉल क्रिक से आपने बहुत अच्छा कमेंट मारा था और मेरा क्वेश्चन जो लिया था बहुत कम लोगों ने आंसर दिया भाई. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. इफ ओनाना गेट्स अ क्लीन शीट व्हाट विल ही बी गेटिंग टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड? किसी को पता है इन द चैट? मैं अभी तक देखा नहीं हूँ एग्जैक्ट आंसर इन द चैट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी नो. ओके या वीडियो, एग्जैक्टली. इवन वीडियो अगर होता है तो बोलिएगा यार, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल for whatever reason judge us basically on that. So agar hota hai next time, tell us upfront rather than me asking you all. But big up to Mana Buzz, absolutely big up yaar. Much love for that. And Fateh is rejoining in a minute. Okay, Mac Alistair के बारे में बात कर रहे थे समर. Okay, got it. Hello Keshav, क्या हाल है भाई? It's like an uphill task for them. Yeah, it on paper it is, but again, having seen 25 UCL finals live myself, I can tell you that it's not over until it's over. As much as City are firm favorites. Luman in the house, Mohammad Sahana was in the house. क्या हाल है भाई? Yes, absolutely big up फतेह हो जाए यार 100%. For whatever reason that celebrity का जो tag है ना हम लोग को हटाना है भाई अपने community से. It's not something we should go. Honestly speaking, that's not something we should do. As much as people might think I'm hater. First African goalkeeper to keep a clean sheet in UCL final. नहीं तो अजिंक्य नाइस वन. फुटबॉल क्रिक्स भी बोल रहे थे और कहीं ना कहीं 2021 में ऑब्वियसली सिटी लॉस एट फाइनल एंड इट वाज एन अफ्रीकन गोलकीपर इन मेंडी who actually kept that clean sheet 1-0. So Mendy was the first African, you can say, or rather one of the first for sure if I remember right. लेकिन the record being that अगर ओनाना रखते हैं clean sheet, this will be the point where he will be getting to Mendy's level of 9 clean sheets in this UCL campaign. Wow. And that is a record in itself, a wonderful record. 9 clean sheets in the Champions League. As much as City बहुत ही अच्छा record रखी है themselves and we showed City's road to the final, हम Inter's road to the final भी देखेंगे in a minute, as soon as Fateh rejoins. तो भाई उससे एक और चीज याद आया मुझे. सब लोग, are the people ready for another question? Very interesting question. और हम आएंगे tactics पर, team news पर and a lot of other conversations. Combined 11 team of the season, सब चीज plan है. It's a live session. I would like to ask you guys, और नॉकआउट स्टेज में तो चलो मैं रोड टू फाइनल दिखाई देता हूं आप लोग को वाइल फतेह ट्राइज टू रीजॉइन और ये नॉकआउट स्टेज में दिखाते हैं ना. तो देखिए इंटर मिलान इन द फर्स्ट 6 मैच डेज वी नो दैट दे हैड अ डिफिकल्ट ग्रुप. बायर्न म्यूनिख टॉप देयर ग्रुप. बार्सिलोना और इंटर मेरे ख्याल से वाज वन ऑफ द मैच ऑफ द सीजन. आप लोग बोले व्हिच वाज योर चैंपियंस लीग मैच ऑफ द सीजन. इन माय ओपिनियन दैट 3-all इज एब्सोल्युटली क्रेजी. मैं और फतेह साथ में देखे थे, आई रिमेंबर दैट. But after that, obviously, they had round of 16 with Porto, then Benfica in quarterfinals, and of course the Milan derby in the semi-finals. Pains me to say it, but that's how it is. Having said that, knockouts में गौर करिए. They have just conceded in one single match, so it could be the 6th clean sheet for Inter Milan in the knockout, which is very difficult, I know, on paper against Man City, but that's a high possibility as well. Fateh, clear as day, भाई, absolutely. तो भाई फतेह क्वेश्चन एक और होता है. Which is the only other team to basically get 6 knockout UCL knockout clean sheets? Anyone in the chat? और मैंने एक क्लू देना है. अगर आप लोग शुरू से देख रहे हो स्ट्रीम का, मैंने उसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
और फतेह एक मिनट रुकिए, आप गेस मत करिएगा, आई वांट टू सी अ फ्यू कमेंट्स इन द चैट. Which is the only UCL knockout team which has got 6 clean sheets during the knockouts from round of 16 to quarterfinals to finals. भाई 6 knockout clean sheets, वो हो सकता है बराबर करे इंटर मिलान अभी. लेट मी नो. प्रेडेटर गेमिंग क्या हाल है भाई, नाइस टू सी यू एब्सोल्युटली. कृष्णा मुझे डीएम करिए यार, मैं डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि वो स्पॉन्सर नहीं करे तो मैं ओपनली नहीं करूंगा, ऑल्दो वी नीड अ स्पॉन्सर फॉर श्योर. Okay, that too are against Bayern, one of us. Yes, the main battle for me would be चलो ये इसको स्टार करो. Coming back to the tactics in a couple of minutes. Onana is the key. ये भी हम स्टार कर रहे हैं. Ankit, I will believe football if Man City don't win by 3 goals. Trust me, bro. This Pep person isn't even playing the second gear. Wow. Uh, yep. Keshav, good point. Barca Inter 3-3 was brilliant match. Absolutely. लेकिन भाई कौन सी टीम थी जो 6 clean sheets रखी? फतेह, over to you. Do you know the answer? एंड भाई गूगल कोई नहीं कह रहा, गूगल क्यों नहीं बोली? कर रहा हूं, but if you are that confident then I have to go with the has to be Chelsea. नॉकआउट्स में नहीं मिला हुआ था ना चेल्सी का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समर. आई थिंक नॉकआउट्स में नहीं हुआ था. आई एम प्रीटी श्योर वी कंसीडर्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन बोथ द लेग्स, और Only अदर एटलीस्ट वन लेग. पोर्टो के साथ भी कंसीड किया था knockouts. समर. ओनली नॉकआउट्स में 6. मैं पूरा वाला तो मैं रिकॉर्ड ये था कि बाय द वे ओनाना विल बी इक्वलिंग मेंडी ऑफ 2021. दैट वाज द रिकॉर्ड बाय द अर्लियर क्वेश्चन जो आप गए थे ना एक मिनट के लिए, तो दैट वाज द आंसर. लेकिन ये वाला भाई एनीवन, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग. यस, अभिषेक हैज गॉट इट राइट ब्रो. Abhishek has got it right. It's Arsenal of 2006. Yes. Arsenal of Riquelme 2006. missed the penalty. Yes. 2-0 against Juventus, 0-0 away from home, 0-0 at home, 1-0 against Real Madrid in the round of 16, then Juventus, then semi-finals किसके साथ था? Villarreal, 1-0 and 0-0. Yes. Yes. तो Wow. भाई आर्सेनल, और कहीं ना कहीं बैड ओमन है फॉर इंटर मिलान और इटालियन फुटबॉल फैंस कहीं ना कहीं. एंड दैट आर्सेनल वेंट ऑन टू लूज दैट फाइनल ऑफ कोर्स फाइनली, बट दे डिड गेट 6 क्लीन शीट्स, ऑल्दो इंटर मिलान आर चेजिंग द 6 क्लीन शीट एंड अ विक्ट्री. मतलब इट डजंट मैटर इंटर के यार क्या गोल कंसीड करेगी नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग. बट उससे एक और चीज मैं पूछता हूँ भाई, क्विक क्वेश्चन एक और भाई, दैट रिमाइंड्स मी अनदर थिंग. मैंने अभी रोड टू द फाइनल दिखाया इंटर मिलान का, और एवरीवन रिमेंबर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटर मिलान lost the very first match right in the season to Bayern Munich. ठीक है, चैंपियंस लीग सीजन में. तो भाई अपार्ट फ्रॉम इंटर मिलान खाली 3 और टीम है who have actually lost the very first game of the season in Champions League and went on to the final. Can anyone name 2 of the 3 teams at least? Everyone, come on. इंटरेस्टिंग बना रहे भाई अपने प्रीव्यू. ऐसे ठेंगा वाला प्रीव्यू नहीं होता है. अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करिए. You guys know that we know our stuff, and that's something that we discuss because we love to discuss football. We're passionate about football. So let's hit that like button, everyone, and answer. जो भी टीम आपको याद आ रही है जो पहला मैच ऑफ द सीजन इन चैंपियंस लीग हारी है, उसके बावजूद they went on to the final of the Champions League. Who are those 3 teams? Which are those 3 teams? Is Porto one of them? Porto is not one of them. I don't think so. No, Porto is not one of them. अच्छा, क्लू दे देता हूँ एवरीवन, आई विल मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग. अभी तक मेरे ख्याल से आंसर आया नहीं है भाई. वन ऑफ द टीम्स दैट आई सपोर्ट इज वन, वेरी इजी क्लू. तो भाई बाकी 2 टीम्स को बोल दो. वन ऑफ द टीम्स दैट आई सपोर्ट बोल दो. एवरीवन, डज एनीवन नो? एवरीवन नोज दैट one of the 2 teams that I support obviously is one answer. भाई एक और आंसर आ गया. बिग अप टू द चैट यार. यहाँ पर आप गूगलिंग चल रही है चैट में, मुझे पता है. स्पर्स, यस, क्वाइट रीसेंट था, तो मैं सोचा आप लोगों को याद होगा स्पर्स वाला. Oh, and they lost to Inter Milan. They lost to Inter Milan the first match. इसलिए तो भाई पूछा मैंने. हाँ, इंटर मिलान फैन को. हाँ, तो भाई स्पर्स. AC Milan in 2007. AC Milan I think 90s में था, तो AC Milan lost their first and went on to win. And the third one is which one? And this is going to be interesting as well, but I think it is Bayern Munich. Bayern Munich is the third one. I don't think anyone got the third one, but Bayern Munich tha. So anyway, coming to that interesting, questions, let's come back to the reality जो है पिच पर. तो भाई फतेह, again from a Man City perspective बोलूँ तो for me what has changed is not just एक mentality जो फतेह ने बोली about Man City fans आप लोग second करिए, but I feel somewhere down the line I know that Dortmund वाले गोल को जो मैंने बोला था, I think came off assist from Cancelo और वॉली था हालैंड का बहुत ही brilliant, and Cancelo has moved on, and the moment Cancelo move on किए ना, I think it was a blessing disguise कहीं ना कहीं. Yes, कहीं ना कहीं they needed one more fullback
अगर वो रखते वो वाला फॉर्मेशन, इसलिए पेप ने सोचा along with maybe making sure he rules that midfield, let's go 3-2-4-1, and he made John Stones that midfielder. In The my midfield. personal opinion, that is exactly why the reason why Man City have been so tactically inept compared to basically आप देखो other teams. लेकिन I feel that they have been next level, not inept. But what do you think, Fateh? Like that midfield of John Stones, Rodri, और let's be honest, यहाँ पर starting 11 की हम इसलिए बात नहीं कर रहे because I think they're going to play the exactly the same starting lineup what they played against Real Madrid. Maybe just Akanji के जगह Aki आ जाए नहीं. But there was some talk that the wingers might change. That Bernardo Silva ki jagah they might play. What's his name? The Mahrez. Mares. Yeah, is नहीं that like? नहीं, आई डोंट थिंक सो. एफए कप में भी लगा था कि he'll play Mahrez and then get back to Bernardo Silva, but he just played the I think the key is about that continuity compared to the recent seasons. Or by the way, remember Pep Guardiola is also chasing his third Champions League win after 2011, so he wants to win it so badly considering जो हुआ है not just in 2021 against us but generally, say against Real Madrid, against Lyon, those all those years, मतलब भूल नहीं सकते, right, कहीं ना कहीं. And I think consistency is the difference. Agar Man City fans might want to second that, let me know. He has hardly changed his team. It's quite obvious. Only thing आप लोग बोलिए, would you go with Nathan Ake considering he's not had enough game time, or would you go with Akanji? I think वो same team दे खेलेगा. I don't think कोई. I know injuries की थोड़ी बात करें तो Kyle Walker थोड़ा सा injury scare था around the FA Cup. I think that was one thing which was discussed, but मुझे नहीं लगता Kyle Walker will be rested for this big game, especially जब आपका एक wing play करती है Inter Milan anyway. So 3-5-2 is what Inter Milan will go, and we'll come to the tactical battles absolutely as well as the team of the season and combined 11s, guys. Big up to Simeone Inzaghi. Simeone Inzaghi क्या है लिमोने बॉल, वो खाली वहां नहीं होता, अपने ऑलमाइटी ब्लूज पे भी होता है. पूछ रहे मुझे, आर यू सपोर्टिंग अस ब्रो? ब्रो कहाँ है मेरा टीम भाई? ये if I support this team, I can't support your team, bro. With all due respect, Simeone Inzaghi, but thanks for super chat. But ये जरूर से बोलूंगा openly that I want a very good final. Let's be real. As much as हम हमेशा build up करते हैं, इस बार नॉकआउट स्टेज में फतेह, I would not say I remember like a close match. Maybe first legs have been very good in terms of quality, like the Real Madrid Man City game showed. लेकिन which game was your best game in this knockout? I can hardly pick one. Can you? I think simply for me, it was based on passion. The first leg, the first 15 minutes against AC Milan, I don't think anybody expected us to be out of the woods that way. I mean, nobody thought that we'd come out all guns blazing and score goals like that. I mean, you don't expect derbies to be like that. So I think for me, simply based on passion, that was the game. If you talk about whether the game was close or not, yeah, I don't think any game has been all that close, right? I mean, this time. Uh, Even the Knockout मतलब yeah, मे बी और इंटर मिलान वर्सेस बेंफिका सेकंड लेग 3-3 हुआ था, तो इट कुड हैव बीन oh, दैट्स द क्लोजेस्ट, राइट? over. That game was already over. Like first leg me. So I don't think like last season we had that drama. That City Real or Real versus Chelsea. I don't think we've had that this year. तो नहीं, आई हियर यू एब्सोल्युटली, बट कोई नहीं भाई. सब लोग मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे, क्या बात है? अगेन लेट्स हिट दैट लाइक बटन बिकॉज दैट्स द मतलब खाना पीना है अपने स्ट्रीम के लिए, सिंपल एज दैट. फुटबॉल किससे बोल रहे हैं? ही इज अ मैन सिटी फैन बाय द वे. आई थिंक आवर प्लेयर्स जस्ट स्टार्ट टू हिट पीक लाइक गुंडो, बर्नार्डो, स्टोन्स, रॉड्री एटसेट्रा, जस्ट टू नेम अ फ्यू. बाय द वे फुटबॉल प्लीज टॉक अबाउट गुंडोगन. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गुंडोगन के लिए बिकॉज गुंडोगन आई थिंक विल बी डॉनिंग द आर्म बैंड लास्ट टाइम पोटेंशियली, क्योंकि आज जो कोवाचिच ने स्टेटमेंट दिया है, very likely लग रहा है Kovacic to Man City, और Gundogan might just end up in Barcelona or anywhere else, Arsenal से भी लिंक हुए थे. तो I think हम थोड़ा ट्रांसफर्स की बात करेंगे, लेकिन I genuinely believe that it might be the last game for Gundogan in City shirt as well as he'll be donning the captain's armband. Plus याद है तो Gundogan भाई किसी ने बोला था 2012-13 वाला अभी हम भूल रहे. फाइनल बढ़िया फाइनल था, अगेन माई मैन आयन रॉबिन बीइंग द हीरो इन द एंड, बट एंड डिजर्वडली भाई, बहुत हेट लिया था इन टर्म्स ऑफ फाइनल्स बिफोर दैट कपल ऑफ देम, तो आई थिंक ही डिजर्व्ड इट. बट या Gundogan lost that, remember, part of the Dortmund team, so he would like to win that and end that on a good note. Manapura, we are way more direct this season, using more individual quality in tough moments, and once we have one to goal lead, just control games very professionally. Exactly. Mahrez no defensive duty, so Mahrez might be a change, but even in terms of changes, बहुत ही rarely कर रहे changes in matches as well. भाई
Big up to Harjas, yeah. Harjas again supporting the channel, always coming back to the Almighty fam. Welcome back to the fam, my bro. Always welcome, you know that. And yes, people want to join membership. Do join, yeah. Abhi summer shuru ho raha hai. End of the this is the last game of the season. There'll be a lot of interactive sessions with the members going on in the next couple of months. Is what is planned. So hopefully we'll come back and इसलिए थोड़ा सा warm करो with certain quiz questions as well. So you'll find something interesting always on अपने दोनों channels. Mahrez is more effective as a sub as of now. He can catch a fullback off guard when the legs are tired. Yes, yes. नहीं, that's a thing. And talk about fullbacks here. थोड़ा सा इंटर की बात कर लेते हैं जस्ट हाउ द बैटल्स विल बी आप लोग सब बोलिए यार विच इज दैट बैटल फॉर मी दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेट प्लान मतलब आप दो देखिए इंटर मिलान ऑब्वियसली काउंटर अटैक करेगी फतेह तो वहां पर 3-5-2 विद द प्रेसिंग ऑफ इन अ स्ट्रेंज वे मिडफील्ड में चालोनोग्लू इज द गाय हु सिट बैक एंड नॉट ब्रोजोविच दीस डेज और यू हैव अ Mkhitaryan along with the man Barella, you know, pressing, high pressing जो होता है ना, and that somewhere down the line allows the ball might come to one of the flanks, Dumfries or DeMarco being very crucial. So, how are you seeing the game pan out? Yeah, do you think that you will play like a 3-5-2 very flat, or you would go with DeMarco being the outlet, Dumfries being the outlet? Because counter will be your game, right? See, Dumfries doesn't really have a lot of pace. He's good Hmm. physically, but he Correct. doesn't really have pace. DiMarco has the pace. He's a better crosser. However, if you remember the Barcelona 3 Inter 3 game, DiMarco is really suspect at the back. And also Hmm. recently, I think in the cup game, in the cup final, it was I think a DiMarco mistake that led to the Fiorentina goal or something like that. You know, there was a chance where he just goes missing. So that's a very scary prospect for us because whether it's Mahrez or whether it's Bernardo Silva, they can actually look at DiMarco and think, fine, they can get against him. You know, they can get behind him. So that's very scary. So I can't really talk about attack. I think the first thing that we have to do is defend properly. I mean, those opening 15-20 minutes that Manchester City play, that's very scary. So we can't really allow them to play their game right from the first moment. We have to take the pace out of the game. It has to be a very Italian performance, you know. Remember the Euro final that we were, I think, watching together. Yes, England yes. How? started off, yeah, England started off like something, you know, they just came out and the pace that they had. But slowly with time, you know, that Italian game sort of it gets in. So I think that's what we have to rely on. So, right now, we can't be looking at DiMarco and Dumfries counter attacking. I think at the start, it's important to keep it nil-nil or at max 1-0. नहीं नहीं आई हियर यू एब्सोल्युटली भाई बिग अप टू नेथन यार नेथन अगेन इनके चैनल भी टैग्ड है नीचे पीपल स्पोर्ट्स एंड नेथन इन द हाउस ट्रैम्पोलिन टोस्ट टू द रेस्क्यू एंड इन केस यू आर वंडरिंग हु इट इज बेसिकली भाई डेरेन इन द हाउस आप बोल सकते हो कौन है भाई अपने बंदे जो खेले हैं अपने इंग्लिश क्लब्स चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान के लिए and obviously one guy and I think the only guy which has played for all the three clubs at least in the current scenario I remember is Romelu Lukaku and उस पर आएंगे हमने बात करना है absolutely अरे माजन अच्छा भाई ऑल गुड बाय द वे बहुत लोग यहाँ देख रहे हो कपल ऑफ देम इनफैक्ट आर आस्किंग माय थॉट्स ऑन द क्रिकेट देखिए आई डिड पोस्ट अबाउट इट पीपल गिव माय स्ट्रीम्स एंड आवर स्ट्रीम्स योर चैनल एज वेल भाई give them a like give all the posts that I put a like big up to Fateh for doing that as well उससे क्या होता है ना जब भी मैं पोस्ट करूंगा ना फ्यूचर यू वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु वुड बी एबल टू सी दैट तो आई वाज एक्चुअली अनवेल लास्ट कपल ऑफ डेज तो इसलिए मैं दोनों चैनल्स पर लाइव नहीं आ पाया था although I would have loved to and that's something that is planned for tomorrow onward because now I'm feeling slightly better so big up to everyone यहाँ पर देखते हैं any other team against this Inter and I would have supported them for Dzeko and his service especially his second goal in the 93-20 season really underrated hard work brilliant comment bro Dzeko this game has not been labeled for Dzeko at all and Dzeko मतलब if you are a City fan Fateh मतलब does Dzeko कहीं ना कहीं get a lot of say not enough love मतलब where would you put Dzeko मतलब for me he's in the history of Man City as well मतलब would you say that मतलब he's never remembered the way that he should be for by City fans at least जहाँ तक मैंने देखा है मतलब for Inter Milan as well and of course people remember for Roma that comeback against Barcelona people don't they gave भाई अपना Greek defender of course Manolas all the क्रेडिट लेकिन जेको ने शुरुआत की थी रिमेंबर वी डिड द रेमोंटाडास वीडियो रिसेंटली आप चेक कर सकते हो बट फॉर दैट वेयर वुड यू पुट जेकोस करियर एंड मे बी दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ thing that he needs or do you think that no Dzeko is probably lucky to still be in the Inter team people are saying Lukaku should start No, I don't think Lukaku can start because what Dzeko adds is he works hard in defense as well. You know, that's something that I think Lukaku just doesn't do, and that's what's scary because
Simone Inzaghi loves his substitution. So I think Lautaro and Dzeko together, at least they press, they harry the defenders. That's something that I think Benzema just didn't do for Real Madrid. There was just, he just allowed Man City a pass. Hmm. So I think that's something that Lautaro and Dzeko will not allow. So they have to start. With regards Dzeko, how he's rated, I think he's fondly remembered by City fans. They have a lot of respect for him. But it's not as if he's not Aguero. That Aguero goal, that moment, the way it went out across नहीं the लेकिन उस world. मैच में भी एक्चुअली स्पीकिंग ही एक्चुअली गॉट द इक्वलाइजर पीपल Yes, फॉरगेट दैट he, राइट एज इन yes, दैट्स द होल थिंग yeah, he तो did. But everything is about that whole commentary with या Aguero. And so Yeah, I and even people remember Balotelli more than Dzeko. yes, That's my point because Balotelli ने दिया था ball if I'm not wrong. He got the assist. Correct me if I'm wrong, Manav and other City fans in the house. But I think that's what is the point. लेकिन Dzeko was कहीं ना कहीं under the radar always kind of been there done that वाला चीज और मुझे लगता है कहीं ना कहीं it was kind of unlucky. Dzeko was such a classy player for us. The 4 goals at White Hart Lane, yes, absolutely, and also the cherry on top, the fifth and sixth goal in the 6-1 victory at Old Trafford. एंड आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर इन द हाउस आप लोग क्या बोलना चाहोगे यार सब लोग इस कमेंट पर लेकिन सच्चाई है आई थिंक कहीं ना कहीं डेरेन आप जो बोल रहे हो अबाउट लुकाकू जो लुकाकू इतना आई नो कहीं ना कहीं वी चेल्सी फैंस टू हेट हिम वो तादार पर है लेकिन फॉर मी मतलब I can definitely see why Fateh is saying about playing Dzeko and not Lukaku. Simple as that. Dzeko is better in the air and hold up play linking with midfield. To be honest, मैं वो जो कॉर्नर गोल किया ना अगेंस्ट एसी मिलान डोंट वांट टू रिमेंबर इट इन सेमीफाइनल्स जो शुरुआत हुई थी बट फॉर मी that is something that maybe I would put my money on Dzeko doing than Lukaku. yeah, That's as simple as that. I think Dzeko has that presence of mind more. Simple as that. Lukaku is more like भाई एक simple question. कौन यूसीएल फाइनल के बाद में सिगार फूकेगा इट बी इधर पेप गार्डियोला और नॉट इंजागी बट लुकाकू ये एक है अगर इंटर जीत जाएंगे तो ये तो पता ही हमें यार वो तो बेसिकली वो सेंटर स्टेज लेने में पहला बंदा है लेकिन mm, ही डज नॉट रियली एक्चुअली टेक इट वी ऑल नो दैट एज मच एज इज इंप्रूव्ड सुशांत तो बोल रहे हैं फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी प्लेयर यस देखिए दैट इज द होल पॉइंट आई एम सेइंग दैट आई थिंक फतेह Aguero definitely is next level. I'm not comparing here. लेकिन what I'm saying is that City के जब legends की बात होती है ना, I don't think Dzeko is even remembered. They talk about all the time only David Silva, the Yaya Torres of the world, the companies of the world, the Agueros of the world, Zabaletas even. मुझे मतलब इतना any talking to any City fans, whichever I've spoken to, मुझे Dzeko comes down really low, and I feel that Dzeko probably gets somewhere down the line forgotten. In my personal opinion but anyway यहाँ पर देर ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया था बट लेट्स एक्चुअली हैव इट अगेन क्या बोलते हो कितना परसेंटेज दे रहे हो इंटर को See, 25% is what I said. I think City are the overwhelming favorites. 75%. I think everybody says Chelsea, but 25%. I think there is a chance that Inter will do it. And as an Inter fan, obviously, I do believe that the 3-5-2 can cause City problems because I believe De Zerbi's Brighton caused them problems, and Conte's system also caused City problems. So I think that's what gives me a lot of hope that we can do it. But is Simone Inzaghi as tactically sort of as good as Conte, for example? The jury is still out. When it comes to me personally, a lot of fans obviously rate him very highly, but I think he's still very inexperienced. This is, I mean, what is just his third Champions League campaign. Pep Guardiola's been managing for what 17, 18 years now at this level. So yeah, 25%. वाओ पता नहीं आप लोग क्या अग्री करते कि नहीं बट एनीवे भाई सब लोग अगेन मैंने एक दो मैसेजेस भेजा चैट में प्लीज गौर करिएगा एवरीवन कम ऑन गाइस डू हेल्प अस आउट हियर it's basically more fun if you have more people so that we can have more discussions there's a lot to be discussed हम हमेशा करते हैं and people short term memory loss होती है and that's human nature भाई हम हमेशा करते हैं टीम ऑफ द सीजन बीट बेसिकली राउंड ऑफ से क्वार्टर फाइनल्स हमने किया था टीम ऑफ दैट राउंड एक्सेट्रा तो होपफुली आई वुड वांट दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन आल्सो हैपनिंग which is something which is due apart from the combined 11 maybe all time as well so that will be some fun. Dzeko was not a very high profile player then at City overshadowed by Aguero Silva. देखिए वही हाई प्रोफाइल प्लेयर ना what do you mean by that Ajinkya that's the whole point I'm trying to make. That is I know that is life that is how it's football में होता है especially social media world में I understand that totally लेकिन हाई प्रोफाइल क्यों मतलब just because he's a Bosnian
that would be kind of almost. I would not like to go there, but exactly that is it. Aguero, David Silva, company, Torre are legends, no doubt. But Dzeko, Navas, Zabaleta, Lescott, Johar, Fernandinho have given a lot to our club. नहीं fair point. मैं वही बोल रहा हूँ ना मानव, बहुत बार जो भी सिटी फैंस का मैंने देखा है कमेंट, जनरली स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम यू एज वेल, मैं देखा हूँ यार, पीपल रिमेंबर से फर्नांडिनो, जाबलेटा, मे बी जो हार्ट बिकॉज इज इंग्लिश मोर कंपेयर टू जेको. दैट्स माय पॉइंट. बट एनीवे, बट यस, एक सेकेंड, आई फियर मोर ऑफ लुकाकू. यहाँ पर लुकाकू के बारे में लोग बहुत जानना चाह रहे हैं. अगेन एज अ सिटी फैन, पीपल माइट हैव सीन हिम इन ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी अ लॉट. तो एक एक्सपेक्टेशन बनी थी व्हेन ही वेंट बैक टू इंटर, राइट? एज इन, हाउ वुड यू रेट हिम जनरली स्पीकिंग आउट ऑफ से 10, जो रहा है इंटर के साथ, मतलब कम बैक, नॉट ऑब्वियसली द फर्स्ट इंट. I would say it's 6.5, Ankit. Like, the first part of the season, he was not there. He was physically not there. Mentally, also, I felt he only wanted the World Cup. The last 2 months, he's been good, but the last 2 months, the pressure's also been off. There was a time when Inter were under a lot of pressure, February, March. But that was the time when again Kaku, he was injured, he was in out. So I would not say that this has been a very good season for him. 6.5, I think, is the maximum that I'd give. वाओ, एंड दैट्स इवन हाई टू बी ऑनेस्ट. मतलब ये बहुत जनरस हो रहे हैं आज फतेह, आज अच्छे मूड में, क्योंकि गेटिंग इनटू द फाइनल ही डजंट वांट टू बैड माउथ लुकाकू इज व्हाट आई एम अस्यूमिंग. बट आई वुड से दैट कहीं ना कहीं मौके पे चौके मारने वाला बंदा है भाई. मतलब हम जो क्लिकबेट की बात करते हैं ना, खुद एक क्लिकबेट ही है. मतलब टू बी ऑनेस्ट, ही डिड वेल. आई एम नॉट सेइंग पोर्टो बेनफिका मैचेस में ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले, लेट्स बी रियल अबाउट इट, ठीक है? वहां पर कोई डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ. एंड आई नो वो इंप्रूव किया थोड़ा सा और फिट हुआ है लास्ट 2-3 महीनों में. And I think against AC Milan as well, when he came on as substitute, I think he almost changed the match to the next level in terms of quality. लेकिन वही है, आप 1-2 महीने के लिए करते हो जब ऑल द आइज आर ऑन यू. आप बेसिकली जा रहे हो, थियरी ऑनरी से बात कर रहे हो, बाद में हक कर रहे हो, वीडियोस कर रहे हो, सिगार फूक रहे हो. मतलब Yeah. आई नो दैट ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, ही लाइक्स टू बी दैट, एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट भाई तूने किया क्या? दैट्स माय होल पॉइंट. एंड even saying things like अभी भी यार, he might not have said directly, लेकिन lot of reports थोड़ा transfers की बात करें तो, मतलब the fact is openly saying that I want to stay in Inter Milan etc. मतलब why would any Chelsea fan want him? फतेह, like isn't that a red flag as well कहीं ना कहीं? मतलब जो I think. ओबामेयांग हमने देखा था with say him coming here, despite coming here he was still in love with Barcelona. It's a red flag, right? Hmm. No, I think what Lukaku is trying to do is he's trying to burn all bridges, because there were rumors that Pochettino wanted him in his system, or at least he wanted to see whether he could work it out. But Lukaku is almost as if that he doesn't even want Pochettino to consider him, and so that is why these statements that come out. And I think his agency, it's owned by Jay Z, Rock Nation, so they like to do all these, like these placements. I mean, he was seen with Megan the Stallion at some award show or something, recently. So there's a lot of stuff going on, Ankit, which I think, it's very premeditated. So I think Lukaku is very clear that he doesn't want to go to Chelsea. So I think he makes these, he makes these comments to ensure that there is no chance that you guys sort of consider him in your plans for next season, which I think is very unprofessional. Like it's not good behavior. You don't want, as any club fan would not want that. I mean, you can keep quiet and you can say it on the download to the club, that okay, look, I don't see a future there at all. I don't want that. But to come out in the media and do all that, yeah, I mean, any fan would be disappointed with that. This UCL is all about revenge football. Yes, by the way, उससे याद दिलाया that Inter were one of the teams obviously that beat that Barcelona team यार. मतलब Inter ने जीता था चेल्सी के साथ 2010 में. I remember around 16 Ancelotti, and then obviously they had that big huge night. Of course, मतलब who can forget Jose Mourinho, मतलब doing a Mourinho absolutely. लेकिन again tactically अगर बात करें, going back to the tactics, मतलब pretty sure it will be similar to how that Inter Milan beat that Barcelona. मतलब although it's Man City, Pep Guardiola, I think tactically एक solidity होगी. But एक अगर solidity की बात कर रहे, is there a chance? I know people we are talking about Dzeko, Lukaku. I'm just saying out of the box मैं बोल रहा हूँ. मतलब एक total जैसे चेल्सी का हुआ था versus Bayern Munich in 2012. People said that we played anti football.
big deal. We lost. We didn't lose the match, right? At the end of the day, Yeah. we won it. I know. अगर हम lose करते तो we could have criticized, fair enough. क्योंकि हमारे पास 5-6 players missing थे इस बार. Yes, big news is players are not missing from suspension either team के लिए. That's brilliant. But considering that Dzeko Lukaku को conversation हो रहा है, I know it's a good problem to have considering the recent form of Lukaku at best. But either ways, you would also say that maybe I'm just putting an idea. Is there a possibility of maybe Inzaghi overthinking for once, or maybe trying to No, surprise Pep by going with an extra midfielder as well? no, there's no chance of that happening at all. I mean, Inzaghi is not going to change his ways, which honestly, I would not agree with that. I mean, if he can overthink and put in an extra midfielder, why not? But I do think that, Lautaro and Dzeko will work in defense as well. So it's not as if they don't contribute defensively, Ankit. So it is what it Okay. is. He's not changed his formation, Ankit, in 2 years. So, for him to do it for just one match, it's just not going to happen. ओके ओके, आई हियर यू एब्सोल्युटली भाई. सब लोग, लेकिन हाँ भाई, टैक्टिकली हम काफी बात कर ले. अगेन आप लोग बोलिए विच विल बी द काइंड ऑफ बैटल विच विल बी वन और लॉस एंड दैट विल विन और लूज द गेम. आई स्टिल बिलीव इट्स दैट मिडफील्ड कोर, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ ना, considering a 3-2-4-1, you all of a sudden have like a Stones, a Rodri, and of course a Gundogan and a De Bruyne, and De Bruyne is a supply. तो आपको वो रोकना पड़ेगा. And वहां पर अगर आप 3-5-2 की बात करते हो तो इट्स काइंड ऑफ अ 3 वर्सेस 4. मैन सिटी का एक्चुअली 4 बन जाता है कोर ऑफ मिडफील्ड, एंड दैट इज वेयर आई थिंक मे बी जस्ट, मतलब आई नो, आई अंडरस्टैंड द थिंग जो आप पर्सनल चेंज नहीं करना चाह रहे हो, सिस्टम चेंज नहीं करना चाह रहे हो, बट आई थिंक Lotaro might play a little bit off Dzeko or the other way around अगर Lukaku खेले, because for me that midfield requires one more person of interest. Much as Barella बहुत ही brilliant किया इस season में, but Fateh, what is your thing that stop De Bruyne, stop Haaland? I know that's the obvious thing, but what do you think that this is basically should be the game plan? एक extra tactic तो definitely करेंगे यार Inzaghi. You cannot say that Inter Milan play the game which has been brilliant by the way. बहुत अच्छे form में Inter Milan, they have hardly losing games. Same like Man City. So still we would know that Man City would win the game, right? So something different. If you were Inzaghi, what would you have done a little bit tactically? No, I would have loved to go with a 3-4-2-1 because Mkhitaryan can play behind the striker, so that would have been great. The 3-5-1-1 or the 3-4-2-1, have Brozovic, have Mkhitaryan, have Barella, have Hakan all in midfield, and try and mirror Pep. But I've never seen Simone Inzaghi use that formation except for one time when Sensi played in that role, and I think that was Simone Inzaghi's first game in charge. And I think Hmm. since then never gone and done that. So that was 2 years ago. So for him to do it in the final, it's a bit too difficult. But that's what I would have done. Like that, I would have loved to have those four guys in midfield. Having said that, if you have those four guys in midfield, who do you bring on? Because there's this young guy called Aslani on the bench, and then there's Lord Gagliardini, and Aslani. Gagliardini does not belong, नहीं and Gagliardini is just pure. अगर आएगा तो ब्रोजोविच ही आएगा. मतलब आई नो इट बिकम्स अ बिट टू डिफेंसिव, बट Ah, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग. यहाँ पर डेरेन बोल रहे हैं ना, हराम बॉल इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सिंपल काउंटर. yeah, yeah. आप वापिस अटकने लगे फतेह. आई डोंट नो इज इट जस्ट मी, पर थोड़ा बहुत फतेह अटक रहे भाई. 2 साल और यूसीएल फाइनल में So डिफरेंस that है. no, but ओके we are फतेह, saying that आई if थिंक we योर play four midfielders from the फतेह start, और इंटरनेट इज एन इश्यू. So that way, भाई फतेह को बोलो भाई, इंटरनेट स्टॉप स्टार्ट हो रहा है थोड़ा. फतेह, इफ यू वुड लाइक टू रीजॉइन ब्रो, you would like to rejoin. I think your internet is stopping and starting. Let me just message फतेह भाई. सब लोग एक सेकंड भाई, मैं देखो 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम को तो आधे बार तो यही आधा घंटा तो ये स्पेंड करते हो. सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइज. द लाइक बटन बेसिकली हमारा खाना पीना है यार स्ट्रीम का, आगे नहीं बढ़ेगा. अगर आप लोग मुझे हेट करते हो, फेयर इनफ, हेट प्रॉपर से हेट कर लो भाई. यूसीएल फाइनल है भाई, तो एवरीवन लेट्स लाइक द स्ट्रीम, कम लेट्स गेट इन दैट. माय ऑलमाइटी फैम, इट्स योर चैनल एज मच एज माइन, कम ऑन. I like to involve the chat as much as possible. आप अगर शुरू में देखो तो भाई certain things which I asked, certain things which I interacted, I can guarantee you कोई भी अपने प्रीव्यू में नहीं बोलेगा. ठीक है, गारंटी देता हूं मैं. यहाँ पर अपना सेल कर रहा हूँ, मेरा सेलिंग पॉइंट है. और यहाँ पर एक कंबाइंड 11 करने वाले हैं हम हिस्टोरिकली, होपफुली इफ फतेह जॉइंस बैक. एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड, मैं इसे मैसेज कर रहा हूँ. ओके, फतेह विल जॉइन बैक बट नो प्रॉब्लम. थोड़ा इंटरनेट का होता है कभी कभी. स्वामीदीप क्या हाल है भाई? और अगेन मैं हाईलाइट काफी कमेंट्स कर रहा हूँ भाई. सब लोग
मैं भाई जब तक 100 लाइक्स नहीं हो रहे हो, यस बाय द वे यू माइट गेट इरिटेटेड एंड लीव द स्ट्रीम ब्रो, मुझे पता है हाउ मच लाइक्स वी डिजर्व इन, मुझे पता है कितने लोगों ने देखा है स्ट्रीम को, एंड मुझे ये भी पता है जितने ज्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब प्रमोट करेगा, क्योंकि यूट्यूब हमारा दुश्मन है। तो भाई लेट्स स्क्रू दैट फकिंग एल्गोरिथम एंड लेट्स लाइक द स्ट्रीम एवरीवन। अगर आप लाइक कर लिए हो तो भाई लेट्स शेयर इट, लेट्स शेयर द लिंक। वो कैसे करोगे, मेरा एक ट्वीट गया है, मैंने मैन्युअली भी किया है, ऑटोमेटिक भी जाता है, इफ यू कैन रीट्वीट दैट अलोंग विद कोटिंग दिस लिंक, ब्रिलियंट। और जो भी लोग ड्रॉप कर रहे हैं जब मैं पूछ रहा हूँ ये चीज, तो भाई एब्सोल्युटली वेलकम टू ड्रॉप, एब्सोल्युटली वेलकम टू ड्रॉप, एब्सोल्युटली। यहां पर हम यूसीएल फाइनल की बात कर रहे हैं with me and Fateh, not bragging, but between me and Fateh, we have watched 50 Champions League finals live when we were alive and watching the match live, and that's what we are talking about. So guys, let's get it there. हम लोग बहुत tactical बात कर चुके हैं, हम लोग कुछ questions पूछे, which is really interesting. At the same time, we are discussing about a team of the season, hopefully, or a combined 11. Absolutely, let's get there. Yes, Nitesh, 100%. Nitesh, big up यार, Man City fan in the house, क्या हाल है भाई? Nice to see you as always. लेकिन भाई यहाँ पर मैंने स्टार करके रखा था कुछ questions. यहाँ पर माना बोल रहे द मेन बैटल फॉर मी वुड बी बर्नार्डो वर्सेस डिमार्को, इफ बर्नार्डो कैन प्रेस हिम लाइक ही डिड वर्सेस कामा, डेविस एंड शॉ, द राइट विंग शुड बी शट, ही इज मोर इंपॉर्टेंट डम्फ्रीज एज नो। बिल्कुल देखिए हमने बात ही किया है, डिमार्को इज मोर से फिजिकल पेसियर एज वेल एज शॉट टेकर कंपेयर टू मे बी अ डम्फ्रीज। डम्फ्रीज इज समवन जो बॉक्स में जाते हैं तो ही इज नॉट बैड, और सरप्राइजिंगली डिड वेरी गुड अगेंस्ट थियो हर्नांडेज, ये बोलना पड़ेगा मानव, इन द सेमीफाइनल्स। लेकिन थियो हर्नांडेज इन दिस फॉर्म इज डिफरेंट वर्सेस मे बी डीलिंग विद वहां पर ग्रिलिश, आई वुड से इट्स वेरी डिफरेंट, वी नो दैट। ओनाना इज द की फॉर इंटर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर और कीपर माय ओपिनियन, इज फॉर्म इन। फतेह से पूछना था यार अबाउट ट्रांसफर्स, दैट वुड ही बेसिकली गिव ओनाना इफ वी वर गिविंग कुलीबाली। मुझे पूछना था बात, बट कोई नहीं। फतेह भाई रिजॉइन कर रहे हैं, अनुराग कोई नहीं, ही टेक अ मोमेंट बट ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेट इट अप अगेन एंड कम बैक। मोहम्मद अली, क्या बात है भाई, रोनाल्डो फैन ये कहां से आ गया, कहीं से रैंडम कमेंट्स आ रहे, वाओ मैन। गाइज आई वांट रियली फीडबैक मैन, यहाँ पर यूसीएल फाइनल की बात हो रही है, ऐसा क्या हो गया यार सडन से हेट हो रहा है भाई मुझे बहुत, प्लीज यार ओपनली बोलिए यार चैट में, क्या हो रहा है सडन से, मतलब वी यूज्ड टू ऑलवेज हैव लिटरली 100 पीपल वाचिंग एंड हम ग्रो किए इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड आई हैव पुट सम वीडियोस इन द लास्ट 2 days ब्रो डिस्पाइट बीइंग अनवेल, एंड आप लोग को दिख रहा होगा वो, तो भाई क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आप लोग अगर देखकर मुझे चांस भी नहीं दो तो मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, और आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि व्हाट मेरे व्यूज है। आप लोग अगर जाना नहीं चाहते तो अलग बात है। तो भाई जो भी लोग देखेंगे बाद में ना, और जो देख रहे हैं अभी, अगर आप लोग शॉर्टर वीडियोस नहीं देख रहे हो उसका मतलब क्या है, आप लोग ने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ही दबाया है, एंड दैट इज हाउ पीपल विल गेट टू नो वी आर लाइव। कम ऑन, योर फेवरेट यूसीएल फाइनल, थैंक्स फॉर आस्किंग मी मैन, उमर ट्रोल फेस, बिग अप यार। आई लाइक द फैक्ट दैट कोई है जो मेरे व्यूज को जानने में इंटरेस्ट रखता है। तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे फॉर पीपल इफ वी आर, बाय द वे आई हैड कॉल्ड अ लॉट ऑफ पैनल पीपल, आई नो दैट मैं तो घंटा जाता हूँ आप लोग के हिसाब से, लेकिन आई हैड कॉल्ड पैनल, अब पैनल आएगा नहीं तो क्या करेंगे हम, गरीब इंसान के यहाँ कौन आएगा यार। देखिए यार फैक्ट इज दैट पीपल, यू आर नॉट फूल्स, यू गाइज आर वेरी मेच्योर टू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। भाई सब जानिए, आई हैड कॉल्ड मल्टीपल पीपल, अब वो लोग अवेलेबल नहीं है और हम लोग के लिए मना करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। As much as I would also like to say that me and Fateh know a lot of football. So guys, let me not say these things repeatedly, bro. Everyone, let's have that. और अगर आपको मेहनत नहीं दिखती तो भाई प्लीज गेट योर आईज चेक्ड, सिंपल एज दैट। आप लोगों को मेरा पैशन नहीं दिखता, नॉलेज नहीं दिखता, मेहनत नहीं दिखता, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन नहीं दिखता, तो भाई आई वुड से इधर फीडबैक दीजिए, या तो लाइक बटन दबाइए, या तो हैव योर आईज चेक्ड। इट्स वेरी रूड बट इट इज व्हाट इट इज, क्योंकि भाई पापड़ नहीं बेले भाई 2 साल से ज्यादा, but I love a UCL final. Omar Trollface, coming back to you. देखिए यूसीएल फाइनल ऑब्वियसली मैं बायस रहूंगा, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। यस ऑफ कोर्स 2005 में बहुत बुरा मेमोरी भी है, बीइंग अ मिलान फैन एट द टाइम, बिग टाइम, उस समय मैं मिलान का ज्यादा रखता था टू बी ऑनेस्ट कंपेयर टू नाउ, दैट्स अ रियल ट्रुथ, क्योंकि मैं मिलान पहले फॉलो करना देखा था। और फॉर पीपल हु डू नॉट नो, चेक आउट माय नो योर क्रिएटर जो हमने 1.5 साल पहले किया था सीरीज, एंड देयर वर अदर क्रिएटर्स वेल, नॉट जस्ट मी। तो वो एक बैड मेमोरी है, बट फेवरेट ऑब्वियसली 2012 यार, इट हैज टू बी। 2021 आल्सो मैं लिटरली रोया था, आई रिमेंबर आई डिड माय फर्स्ट लाइव स्ट्रीम आफ्टर 2021 फाइनल, दिस वाज माय फर्स्ट लाइव स्ट्रीम ऑन द चैनल जो आप देख रहे हो। तो भाई दैट इज इट, बट 2012 मैन द स्टोरी वाज नेक्स्ट लेवल एब्सोल्युटली। और उमर आप भी यार एग्री करते हो, बीइंग अ चेल्सी फैन आई एम अज्यूमिंग, राइट? लेकिन हाँ काफी अच्छे फाइनल्स हुए यार, ऑफ कोर्स लिवरपूल स्टोरी यू कैन नेवर फॉरगेट। आई वुड आल्सो लाइक टू से 2008 का भी बहुत ही इंटेंस मैच था, बहुत अच्छा लगा था मुझे वो फाइनल। बट आई वुड आल्सो लाइक टू से 2003-4 का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
और या 2003-4 गए था इफ आई रिमेंबर राइट, और वाज इट 2-3 बेसिकली, where Juventus and AC Milan, people do not like close matches, low scoring games, लेकिन मुझे अच्छा लगा था वो फाइनल, पेनल्टीज में हम जीते थे AC Milan, that is we're talking about. And yes, let's get past 100 likes ASAP guys. Again, people who might think that I'm rude or at times basically ये हो रहा है ना, देखिए at times क्या होता है ना, we have to understand that it's a live stream, so things happen bro, but कोई नहीं, much love to everyone joining in. फतेह अभी भी अटक रहे हो यार, I think it's your internet today, but no problem. फतेह is uh, कोई नहीं, I think you're back. Fateh, you're back. I think now it's okay. It's better. It's better. Fateh, start speaking. I think you're fine. I think my internet is really bad. But we can hear you. We can hear you. Let's continue. Thanks man सौम्यदीप again. मतलब ये बात मुझे स्टीरियोटाइप क्यों किया जाता है पता नहीं सौम्यदीप, क्योंकि हम अगर आप देखो ना हमारे चैनल का कंटेंट, फतेह knows it more than anyone, that in a week when we do about 10 videos in both the channels, and we have 2 channels for you, भाई चेल्सी के 50% भी वीडियोस नहीं होते, इनफैक्ट ज्यादा बाकी का कंटेंट होता है, बिकॉज आई लव फुटबॉल. अगर आप लोग चेक करो, फतेह इज एन एग्जांपल, आई एम एन एग्जांपल, we both, particularly man, speaking of Fateh as well, we started football watching mainly because firstly international football, we started from the Euros, the World Cups, and then Serie A, because उस समय Serie A बहुत ज्यादा मतलब hype था, plus बहुत ज्यादा टीवी पर आता था compared to other leagues, and then obviously the World Cup came to Asia, and that's when Premier League took to the next level. That's when things change in Asia in terms of football. But that's how it is. But कोई नहीं. Okay, off topic, but हाँ वरुण, बाय द वे जो भी इसके बारे में पूछ रहे ना, हम उसके बारे में करेंगे. वरुण आप यहाँ अगर पूछ रहे, अच्छी बात है. मैंने पोस्ट भी डाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी भाई 2 दिन से, फिर भी आई ट्राई टू डू अ वीडियो व्हिच आई पुट इन बोथ इन दिस चैनल, बट आई विल ट्राई एंड डू दैट टुमारो डेफिनेटली, क्योंकि 2 चैनल से भाई तबीयत खराब थी, फिर भी आई हैव डन 3 वीडियोस इन 2 days. सो जस्ट थिंक फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव मेरे भाई, बट आई हैड पोस्टेड इट अर्लियर इन द डे, बट कोई नहीं. Ankit bhai, what's your opinion on City as an institution? And I'm a City fan, but even though we win UCL, people will still find reasons that we are not a good club. Wow, that's interesting. I know. मतलब कहीं ना कहीं opinion is बहुत different in this from people to people. Bhai Fateh, what is your opinion generally? The way City have come up, मतलब do you relate to the City team just like Chelsea were in the mid 2000s? I think that, see, a lot of people have made this fetishization that they just hate clubs that spend money. Like if you, as a Chelsea fan, there were a lot of people in the, around 2002, 3, 4 who hated Chelsea because they had money. There were people in the 90s who hated Inter because Inter was throwing money, So, or for example, look at AC Milan, when Berlusconi came, that was the first oligarchic, that was the first club with money. That was the first sort of modern club, So that is why AC Milan won so many Champions Leagues, Ankit, because they had Gullit, they had money to get Van Basten, they had money to get Rijkaard, So that is where this whole thing starts. It starts with Berlusconi and AC Milan. So why is money being hated? Is my question. Like AC Milan has been criticized for that, Chelsea has been criticized for that, City, PSG. So I think somewhere we'll have to stop. It is just the truth of the game that the more money you have, the better players you'll have, the better coaches you'll have. So I mean, I don't see any reason to hate Man City, that a lot of people have, oh well, this is not nice. The kind of football that they play, I mean, or for example, when I talk about Chelsea, the kind of football that Jose Mourinho played. Like, I know people were not fans, but my God, that team was so difficult to play against, Ankit. Like, how do you score against that Jose Mourinho team? Like, like even till today, when we look at Jose Mourinho, 14 goals conceded in one season. I mean, come on, So money will allow you to get those sorts of players, but that doesn't mean that there are not good coaches or good team spirit in those teams or characters, in those teams. So I think we have to stop hating. I mean, it's a fact that football is run by money, and if you don't have money, then it's very sad though. For smaller clubs. I mean, how do we level the playing field? I'm up for that debate. But I don't see any reason to hate teams simply because of their owner. Like why? No, it's a good point. What do you think? Like, Definitely a good what are point. your thoughts? नहीं, Yeah. डेफिनेटली मैं क्योंकि आप देखो मतलब द ग्रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड्स ऑफ द यस्टर्स एज वेल, आप देखो तो Hmm. मतलब Yeah, yeah. डिस्पाइट स्पेंडिंग सो मच,
and trust me, they have, अगर आप देखो ना लास्ट 25 सालों में मैनचेस्टर यूनाइटेड आर राइट अप देयर along with maybe चेल्सी, मैन सिटी. मतलब इंग्लैंड की अगर बात करें ना, वी आर राइट अप देयर in terms of spending as clubs. बट आई वुड लाइक टू आर्ग्यू यहाँ पर दैट इतना ज्यादा स्पेंड किया मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस लुक अवे, लेकिन दैट्स अ फैक्ट. अगर इतना ज्यादा स्पेंड किया एंड द काइंड ऑफ टैलेंट यू हैड स्पेशली इन say early to mid 2000s, late 2000s, even 2010 के तक, I would say 2012 तक in fact, I would like to argue Manchester United kahin na kahin underachieved with that awesome squad. मतलब they were so good in my opinion, and with Sir Alex, the goat, one of the goat managers मेरे ख्याल से. But वही है ना, उस समय you need to see what the other clubs in Europe are doing. Even they were spending. Real Madrid Galactico side could not win enough. Even that we say a lot of times, right? As much as Real Madrid are the synonym of Champions League at times, लेकिन the Galactico side were underachieving. But Ankit, did Man U spend a lot till around 2003-04? Because tab tak to they didn't spend much. I think Veron was when I their say highest. spend, it's not about money, Fateh. It's about getting players. Like for example, Bayern Munich. भाई कल वापस राफेल गुरेरो वहां जा रहे हैं. मतलब I'm just saying, like the pulling power or beat players, the Manchester Uniteds of the world were known for it, especially under Sir Alex. ठीक है, वो एक है जो बायर्न म्यूनिख का बोलबाला रहा है in Bundesliga, with all due respect. ठीक है, so these are facts I'm throwing. I'm just not throwing like that. मतलब अब देखिए, you would like to argue even Bayern Munich for that instance. मतलब probably even they should have probably arguably won more Champions League. इसलिए ना देखिए, Manchester United, Bayern Munich, maybe even Chelsea of mid 2000s, we should have won another Champions League. मैं तो बोलता हूँ, मतलब we have not won enough Champions League. That is why maybe Real Madrid, Barcelona, and earlier on AC Milan have won a lot of Champions League. और वहीं पर Inter Milan, याद रखिए, in the modern era is just the second Champions League final, although they have won Champions League in the earlier era. This is what maybe will change that tradition maybe in Italian football. लेकिन Italian football की अगर बात करें quickly before coming to the combined 11, फतेह, भाई सब लोग, आप लोग भी बताइए, और हम आएंगे थोड़ा और न्यूज पर पॉइंट ब्रेक. यार आप लोग ट्राई एंड शेव द कॉन्वर्सेशन. पीपल, वी आर ट्राइंग टू टॉक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. Put your comments, put your questions around that. I would love to take that for sure. लेकिन आप टोटल ऑफ टॉपिक चीज पूछोगे आफ्टर 1 hour of speaking and more to speak, then I don't know what to say. Much love bro, everyone. तो यार यहाँ पर what is they talking? I think यहाँ हाँ, in Italian football, फ्योरेंटीना यार, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ने कोपा इटालिया में उनको मात दे दी फाइनल में, एंड देन दे गॉट वन ओवर वेस्ट हैम. But I think Ankit, Fiorentina, but Fiorentina over again. They're good for 60 minutes. If you look at that second goal, they were playing such a high line in the 98th minute. You don't expect Italian teams to be doing that. And their manager, he gets lauded because he plays this sort of malarkey kind of football, but it's so anarchic, it's very un-Italian. So I feel like they got what they deserved. Even in the cup final against Inter, they took the lead and they didn't know how to handle it. Even yesterday when they equalized, they don't know how to handle, they don't know how to manage those small things. Because imagine, like a pass through midfield in the 98th minute, and all your defense is near the halfway line. I mean, I'm sorry, but if that's how you're going to play, you're not going to win trophies. You might win hearts. कि we play this way, we play that way. You're not going to win. Agreed. और इसलिए मतलब इंटर मिलान की हम बात ही किए थे टैक्टिकली फतेह, लेकिन ऑन द अदर हैंड जोसे मोरिन्हो did this thing, Roma versus Sevilla. But then I genuinely believe the referee was to blame for that. That is 110% a handball. How do you not give that? Like, I mean, please come on. मतलब अगेन यू नो माय व्यूज, हमने बात ही की थी फतेह उसके बारे में. भाई एवरीवन नोस, हमने वॉच अलोंग जब किया था. देखिए मेरा बॉटम लाइन ये है ना, इज इट कहीं ना कहीं अब मिराज दैट दिख रहा था कि इटालियन टीम्स, भाई इटली football is coming back, you are Europa League finalist, you are Conference League finalist, you are Champions League finalist. Not just that, Champions League में you had Napoli, Inter Milan, AC Milan all doing very well, despite Inter Milan, AC Milan not finishing first in the group stage. At least लग रहा था कि भाई Italian football is going in the right direction. मतलब do you think it was just a mirage, or do you genuinely believe that Italian football is going in the right direction? No, Ankit, it is, because if you look at the under-20 World Cup that's going on, and your boy Casadei, I mean, you've taken him from us, from Inter Milan, and that's a player to look forward to in the future. I think he's doing so well in the under-20 World Cup, and Italy is doing very well. So there's this generation of young Italian talent that's again coming up, that is giving us a lot of hope, because you need that homegrown, that talent, the Barellas, the Bastonis, the Tonalis, So I think a lot of such players are coming up. Losing a final,
again, I mean, the Roma Sevilla game was so close. Even yesterday's game was very close to call. It was not as if it was a landslide victory for one team over the other. But absolutely, Gaurav. Let's hope you become a Inter fan soon. So I think भाई गौरव क्या हुआ भाई चेल्सी का बदल दिया प्लीज कंटिन्यू yeah, so I think it's not fair to say that Italian. I mean, it's a good thing that Italian teams have made the final. Like I think Ankit, you and I would prefer Italian teams being there than rather than Spanish teams, because we are so used to watching Spanish teams. अगेन मैंने बोला ही है मतलब यहाँ पर पीपल माइट फील दैट आई एम अ हेटर बट द फैक्ट इज भाई मेरा फुटबॉल से जब प्यार आया था ना सबसे पहला चीज मैंने क्या नोटिस किया था 94 वर्ल्ड कप में दो चीज नोटिस की थी जब मैं बच्चा था लिटरली एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई रिमेंबर इज ऑब्वियसली मैराडोना getting banned obviously before that even before the eve of the world cup Ruud Gullit fighting with Dick Advocaat ठीक है आप उसका Dutch manager and walking out he was a captain तो Ruud Gullit Maradona story and the third was obviously 94 if anyone has watched highlights people who remember Roberto Baggio missing that penalty ठीक है in the final against Brazil so for me those are the three moments और Roberto Baggio अगर आप देखो Know Your Creator series people you will know that काइंड ऑफ मोमेंट स्टूड विद मी और उसके बाद वो जो कार्ड्स आते थे ना चूइंग गम के साथ में आई टू बाई एंड आई हैड सिल्वेस्टर स्किलाची रोबर्टो बाजियो उनके सब कार्ड्स कलेक्ट करके रखता था ठीक है एंड देन ऑब्वियसली केम लाइक अगर मैं टीवी में फॉलो करता था आफ्टर माय 10th सो आई यूज्ड टू लाइक सी ऑलवेज दैट सेरिया वाज अ बिग थिंग तो एक because of the fact that we both have been exposed to Italian football a lot compared to maybe even La Liga bhi bahut aate the but only used to be the big games in La Liga and Premier League after 2000 obviously started so that is the story so answer is yes put it I think but Ankit third I think Italy I would still say that EPL La Liga and Serie A would be the top three leagues like I would still say that as good as Bayern Munich are the Bundesliga outside of Bayern Munich is really it's not good enough so I think as long as Italy is in the top 3 I think it's a good thing I mean yeah without money as it is you can't climb भाई इससे ना मैं फेवरेट इंटर साइड ऑफ ऑल टाइम नहीं करेंगे हम करने वाले एक ऑल टाइम और लास्ट 20 इयर्स के यूसीएल फाइनल्स का 11 मतलब आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन दैट आप लोग बोलिए कंबाइंड 11 करते क्योंकि क्यों मैन सिटी और इंटर का जनरली कंबाइंड 11 करेंगे तो वी ऑल नो दैट सिटी के 7-8 प्लेयर्स आने वाले मैन और इंटर के खाली 2-3 प्लेयर्स आने वाले एट मैक्स एंड मैन सिटी डिजर्व इट एज वेल तो फतेह आर यू अप फॉर इट एवरीवन इन द चैट आप लोग बोलिए इफ यू गाइस आर अप फॉर इट वी विल डू अ कंबाइंड 11 बट वन ऑफ एन इंटरेस्टिंग शॉट हम तो करेंगे यूसीएल फाइनल्स ऑफ द लास्ट 20 इयर्स आपने जो भी देखा है ना उसका एक कंबाइंड 11 अगेन इफ यू गाइस हैव नॉट वॉच्ड you can check the stats and highlights absolutely side by side लेकिन भाई it will be something interesting तो फतेह अगर आप जाएंगे only UCL finals consider कर रहे 2003-4 से obviously the season where obviously Milan was there then Porto story came then obviously slowly but steadily Chelsea आई then of course Liverpool who can forget that final then you had obviously Bayern Munich doing what they deserve Inter Milan themselves doing what they deserve Real Madrid कैसे नाम नहीं लिया है अभी तक has to be there Barcelona 2009-11 how do we leave people out how do you leave people out like how Champions League final performance what you remember that's all यहाँ पर I know popularity वोट चलेंगे in the chat अगर हम ज्यादा लोग आ सके तो भाई हम पोल भी करेंगे लेकिन उससे क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा सब लोग को लाइक बटन दबाना पड़ेगा so we'll have it सुशांत को तो इंटरेस्टिंग लग रहा है everyone we'll do only UCL final performances के हिसाब से याद रखिए it's not on the name करेंगे तो it'll become like an all time 11 नहीं this is UCL finals try and remember UCL finals it could be as recent as Liverpool beating Spurs or maybe Chelsea beating City recently as well as Real Madrid winning it last year against Liverpool वो इतना recent भी हो सकता है तो all time नहीं है it's like a last 20 years UCL last 20 UCL finals के अपना 11 select करना है ठीक है yes it might miss that's the whole point of the conversation Sushant that's the interesting debate that you're going to have but everyone so are we ready we'll have kitna formation 4-4-2 or we'll go 4-3-3 I don't know I mean 4-3-3 करना पड़ेगा because we'll have to put Messi and Cristiano Ronaldo पहली जवाब दे दिया फतेह रहता है वो तो देना ही है लेकिन भाई यूसीएल फाइनल परफॉर्मेंस पर एक सेकंड फतेह has not got the game Fateh has not got the game everyone no Ankit are you saying that see okay so मजाक कर रहा था obviously are we saying या सो या फिर तो हम ये कहें कि बारिंग दोस टू फिर बनाते हैं हाँ चलो
तो सौम्यदीप, रोनाल्डो, मेसी आर रनिंग द टीम, ठीक है? सो दिस इज अ ऑन पेपर वाला एक फिक्शनल टीम, मजे के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हम टैक्टिकल बहुत बात कर लिए, टीम न्यूज के बारे में बात कर लिए, एज वेल एज हिस्ट्री के बाद बात कर रहे हैं, रोड टू द फाइनल के बारे में बात कर लिए, ठीक है, विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफर्स। यहां पर हम करेंगे फ्यूचर में, सोचिए, एक लास्ट 20 यूसीएल फाइनल्स का हमें एक 11 बनाना है, दैट टीम इज ओन्ड बाय, को ओन्ड बाय रोनाल्डो एंड मेसी, तो दे कैन नॉट बी पिक्ड, ठीक है, Excellent. बिकॉज They दे विल have बी all the ऑब्वियस money in the पिक्स। world. Yeah, फेयर yeah. इनफ। तो भाई सबसे पहले गोलकीपर से शुरू करते हैं। एनी वन Hmm. परफॉर्मेंस दैट यू रिमेंबर फतेह, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप देखो तो कौन होगा? अगेन मैं देखो, फॉर्मेशन, यू नो व्हाट, आई मैं माइट पुट मैं फतेह प्लीज स्टार्ट गो तो अहेड। करूंगा कि पीटर श्माइकल in 99 was stunning. Oliver 2003 Kahn in onwards, 2001 was 2003 stunning. onwards. No, no, I'm coming to that. Buffon in Okay. 2003 was quite fantastic. One name that Ankit, Jersey Dudek in 2003. I know 2005 he conceded 3 goals, but with the way he saved those penalties, I mean, with that, the drama that he did, he came off the line, and there was that save on Shevchenko also that he made. Peter Cech in, like how do you अब go मैं against सोच रहा Peter हूँ भाई, Cech in आया क्यों नहीं 2006? नाम, एक सेकंड, अब अभी मैं तक पीटर पहुंच रहा हूँ ना चेक। उधर, बट अगर मैं उधर पहुंच भी जाऊं तो उसके बाद भी थिबो कोर्टुआ मे बी समवेयर Yeah, I think नहीं you know what, तो as much as recent लग रहा है, I यू think Thibaut Courtois was one of the best performances. Navas as well was brilliant, या सो definitely क्या 2014 मतलब में अभी क्या, आई थिंक मुझे याद है रामोस ने जब हाँ मारा था ना 2000, उस समय नवाज था क्या 2014 में रियल मैड्रिड का कि इकर कसियास था, इफ एनीवन कैन रिमाइंड मी, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब नवाज था रामोस ने, हाँ, जब रामोस ने इक्वलाइजर मारा था ना, तो उस समय तक बेसिकली लग रहा था कि यार एटलेटिको शुड हैव बीन 2 अप, एंड वहां पर रामोस ने मारा था, दैट इज बिकॉज द गोलकीपर, माय ओपिनियन। कान, अगेन, कान कौन से साल के लिए जा रहे हो आप? केशव, डू लेट मी नो, यूसीएल फाइनल कान, 2001 नो आई, तो again 2001 not counted by, again repeating for the third time guys, last 20 years का अंकित लेट्स UCL काउंट फ्रॉम finals 2000 ब्रो performance 11। नहीं नहीं नहीं, ये 2003 से, अब 2000 सो बहुत पीछे हो जाता है, आप मेजॉरिटी चैट में दे डोंट रिलेट टू इट, दैट्स द होल आइडिया। तो मैं तो देखा हूँ, ठीक आप है भी फिर देखो, फिर तो लेकिन वी वांट टू इंक्लूड द चैट। वैंडर सार फॉर हाँ ठीक है फिर मैन तो आई थिंक यूनाइटेड, या ही वाज वेरी गुड, पेनल्टीज, सो दैट्स डू समथिंग। वी गो फॉर चेक बिकॉज ऑफ 2012 बिकॉज आई थिंक चेक kept us in the game absolutely 100%, प्लस रॉबिन का जो पेनल्टी मोमेंट था, बट या यू कैन आर्ग्यू भाई वैंडर सार से ज्यादा मैं दूंगा चेक को पॉइंट्स, बायस बोलोगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अ न्यूट्रल हैट, यस पेटर चेक इज राइट, बट आई थिंक यू नो व्हाट, ऑनेस्टली अप अंटिल लास्ट ईयर अगर आप पूछते ना मुझे, पता है, मैं बोलता पेटर चेक। आई नो पेनल्टीज सेविंग इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, एंड आई नो he actually kept us in the game big time, Petr Cech, in जो dominating performance था बायर्न म्यूनिख का, but I think Thibaut Courtois का जो level of saves थे, that was great bro, in my opinion. People might not agree with this, but ज्यादा लोग बोल रहे हैं चेक यार, in the chat, भाई क्या हाल है, सब लोग यस लाइक because बटन दबा दीजिए, the चेक। reason why Ankit the reason why I would go with Czech was because penalties tak bhi he was there. Penalties tak he I was don't there, and think he Courtois actually, Olic, yeah, Olic might remember, he might have nightmares till today. yeah, I remember exactly. that So I think absolutely. and I'm warning you, there is going to be no Drogba here. So I think you must put Czech because that's the only Chelsea player that I think we can include here. ओ माय गॉड भाई, यहाँ पर थप्पड़ मारा है ना नहीं, इनडायरेक्टली, पता नहीं but मुझे। Ankit, but think about it. We have to do justice to every club over 20 years. फेयर I इनफ, mean, चलो think भाई, about that. Like, किसको छोड़ेंगे? कोई नहीं, नो प्रॉब्लम एवरीवन, मैं आपके देख रहा हूँ कमेंट्स, सब लोग हाईलाइट भी कर रहा हूँ, बाय द वे बिग अप टू वेंकटेश फॉर कमिंग ऑन ब्रो, ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन एज वेल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन एंड द लाइक बटन। कसियास 9 सेव्स इन द फाइनल, कोर्टुआ, आई थिंक दिस, मैं बोल रहा हूँ कोर्टुआ और चेक में से होगा, लेकिन कोर्टुआ इज अ स्नेक, वी आर नॉट गोइंग बाय दैट, वी आर गोइंग बाय सिंपल परफॉर्मेंस, सिंपल एज दैट, खाली How फाइनल many में। how many Champions उदयन League व्हाट्स अप? titles, Ankit? How many Champions League titles does Courtois have? Like he won last year. उसके पहले? Doesn't matter. We are just telling which was the best performance in the Champions League final. मतलब हाँ, but I agree with No, you. but चेक but क्योंकि if पेनल्टीज if तक था। you're saying, पर I अगर agree with you. कोर्टुआ कितने चैंपियंस लीग जीता है, लाइक अगर 2-3 जीत चुका है तो फिर तो कैसे निकालेंगे उसको?
Courtois, no, has he? I don't think so. नहीं ना, पिछले साल ही है ना. नहीं, I don't think so ना. Definitely not, because भाई ये चीज मैं बोलना भूल गया. 2021 में it was a team which beat Real Madrid, which went on to lift the trophy. Last season it was Real Madrid, and this time it could be Inter Milan. Just saying. But Man City will want to say that because उन्होंने beat किया है. I got that wrong. But anyway, I think it was last time itself. But UCL medal then Casillas. Wow. But anyway, center backs, everyone. Let's go with the reason we have put check is because एक तो हमने reasoning दे दी है about the penalties thing versus the Courtois just about. But at the same time, आप लोग के comments के हिसाब से गए हैं. I've seen all the comments. More check था than Courtois. Simple as that. भाई मेसीज गोट तो बोल रहे हैं यहाँ पर पुयोल एंड रामोस विदाउट अ डाउट. भाई साल बोलिए सब लोग. आई एम एवरीवन डू नॉट जस्ट पुट नेम्स. वी आर नॉट पिकिंग प्लेयर्स ऑन द एबिलिटी और द स्टैचर ऑफ द प्लेयर्स. मैंने एक कमेंट देखा था, ये देखिए, mention the performance here in the same comment. तो आप लोग अगर बोल रहे हो, say for example even ironically Christensen for a 2021 center back, people remember he replaced Thiago Silva and it was a great performance. Rudiger for 2021 example दे रहा हूँ, या और it could be basically Puyol. आप बोलिए that then the year, आप ये ऐसे comment दीजिए, so that will be known that आप लोग आपका फुटबॉल जानते हो and you're going by that. Yes, absolutely. So Puyol 2008-9, but again, was he tested as much compared to other centre backs? No. I would give a big shout out to Lucio. I think Lucio deserves it. 2010 में. Fateh, what do you think? See, for me, the two people who have to be there are Maldini and Nesta because they've done it 3 Champions League finals, and along with Fateh has Ramos. not got the game, bro. Fateh has not got the game. No, it is basically the performance of a Champions League final. I get it. I get it, Ankit, but what was wrong in Maldini's performance in 2003 or 2007 or 2005 when he scored that goal? Absolutely great point. Exactly. जो लोग बोल रहे हैं ना 0-0 boring था भाई, Maldini, I agree. And he kept clean sheets. You know, these defenders are not keeping clean sheets. The Ramoses and the Puyols, they are not keeping clean sheets. Those defenders used to keep clean sheets, and as a defender, you don't concede a goal. You know, like, so how do you put any of these guys there? So I would not. Ramos, I would put, because Ramos scores goals also. So Ramos, I would put, but I would definitely put Maldini. Like, you don't make a defensive lineup without a guy who doesn't concede in a Champions League final. चलो यहाँ पर भाई वेंकटेश बिग अप यार, आपके लिए मैं अलग से कमेंट टाइप किया था यार इन बिटवीन द लाइव स्ट्रीम. आपने देखा ही नहीं, प्लस मैंने शॉर्ट आउट भी दिया, प्लस मैंने बोला भी स्पैम मत करिए मेरे भाई. देयर इज मल्टीपल काइंड ऑफ सीरीज दैट वी हैव. बीट हुए माई क्विज, यू कैन नॉट फाइंड दैट क्विज बीट ऑन इंटरनेट. आप मजा करोगे, 4 सीजन हमने किया, बहुत मजा करोगे, देखना वो. एब्सोल्युटली knowledgeable and fun at the same time. Then आप देख सकते हो नो योर क्रिएटर, उसमें मेरे अलावा there are other creators well we are talking about, so you'll know about that. So that's a different stream and different videos already ready for you, bro. So आप वो देखिएगा बाद में. अभी let's talk about the things we're speaking. Okay, Carvalho, wow, that's a good shout. Carvalho is a brilliant shout for Porto, man. Yeah. He was absolutely sensational actually. Brilliant shout. नहीं, एक सेकेंड, बायस बोल रहे, देखिए हम डिस्कस करें बड़े भाई अभी तक. I don't know man, anyway forget it. Let's move on to the stream. भाई देखिए यहाँ पर 5-6 नाम लेने वाला हूँ मैं. कमेंट्स भी देख रहा हूँ आपके, based on that, based on what I have seen live from 1999, from 2003 sorry, and जो फतेह ने देखा है और उन्होंने बोला है. तो I think big shout definitely Maldini. You cannot forget that, bro. 2003 वाला, ठीक है, जो था against Juventus, you cannot forget that. 2004 वाला Carvalho वाला, ठीक है. These is a big shout out for sure. In terms of center back, definitely one is not putting a Liverpool Milan wala for sure. यहाँ पर Puyol definitely deserves एक shout out, लेकिन was he tested? Question mark है. Ramos for sure deserves it. आप yes, you're picking center Ramos back. has to be in. तो Ramos तो भाई everyone agrees. Ramos को डाल ही देते हैं. Ramos को डालने पड़ेगा. Ramos तो you can't. ठीक है, तो सर्जियो Ramos तो डाल दिया अपन, ठीक है. सर्जियो Ramos डाल दिए. दूसरा सेंटर बैक के लिए मैं बोला हूँ भाई, Rudiger 2021 deserves a huge shout out. It was almost like a goal saving kind of a save, bro. The moment that he had against Foden, huge shout out. Not biased, that deserves a shout out for sure. Lekin I think Maldini is a goat considering what happened to Maldini recently and the fact that you have a person with a soft corner. We can put Maldini. Ankit, we can put Maldini as the left back. I don't think. Could be. Yeah, we can put him there. We can put Maldini as the left back, and we can keep the centre back open for, you know. देखो Puyol, I would have loved to put Messi's goat. Problem with Puyol is only that he was brilliant, and आपको पता है Messi's goat. मेरा ये goat level नहीं डाल रहा हूँ.
गोट 11 में बेसिकली मैंने पुयोल को डाला था. पीपल रिमेंबर दैट स्ट्रीम जो मैंने किया था दूसरे चैनल में एज वेल एज इन दिस चैनल. भाई उसमें मैंने डाला, दैट्स हाउ मच आई रेट पुयोल. लेकिन I know he was very inspirational in the finals, absolutely no two ways about it. Lekin did he have the performance which kind of, kept them? Matlab, even people might laugh at me, but 2012 mein, the way that Chelsea were dominated by Bayern Munich, the thing which Cahill and Lewis did, David Lewis of that time was actually good. And David Lewis and Cahill jo injured the, they did that. I think that deserves a shout as well. People might feel biased, but that's a fact. On the other hand, you can also argue Dortmund के लिए जो 2013 में किए थे, that was against Bayern Munich side, because that Bayern Munich side was next level. I think they deserve a shout out, लेकिन losing side नहीं लेंगे. जॉन But टेरी तो Ankit, मिसिंग थे फाइनल में. losing side तो नहीं लेंगे, but even the Atletico Madrid defenders Godin and Miranda and Gordon, yes, even that's a shout out, bro. those people also deserve a lot of respect. I mean, they Vidic, didn't get to play. Vidic of 2008 was Vidic, brilliant. 2008, नहीं, yeah, लेकिन yeah. आई थिंक आपने जो रीजनिंग दी ना, मतलब But you have to win it. अगेन बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है सेंटर बैक्स का. तो मैं देख रहा हूँ काफी लोग पुयोल के लिए जा रहे हैं, काफी लोग. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट आई वुड पिक दिस, टू बी ऑनेस्ट, पोर्टो के लिए, नॉट फॉर चेल्सी. पीपल पोर्टो के लिए जो कार्वालियो ने किया था ना, आई थिंक ही वाज दैट लेवल. Ankit, was Porto tested defensively? भाई मोरिएंटस वाज प्राइम मोरिएंटस यार उस समय. कम ऑन, Ludovic Giuli, Morientes, that Monaco side wasn't bad at all. No, they were not bad, but that final was just very one-sided. Like yeah, again 1 minute motivation, Van Dijk versus that Van Tottenham. Dijk. भाई बहुत ही बुरी थी उस फाइनल में, in my opinion. देखो, we are not going by Ballon d'Or वाला चीज, we are going by the performance in that final match. अगर आपने नहीं देखा है तो भाई you can go and check the stats if you want. But कोई नहीं भाई, अभी के लिए मैं डाल देता हूँ. आप लोग अग्री नहीं करोगे. I genuinely believe, क्योंकि इतना डिबेट हो रहा है ना, I personally, I'm not putting Carvalho of Chelsea, I'm putting Carvalho of Porto. यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो people बोलेंगे biased हो रहा हूँ. ठीक है, fair enough. मतलब do you strongly disagree with this, Fateh? I mean, he was a fantastic centre back, but I don't know how we put him and then we say no Puyol, because Puyol's won it 3 times, I think. नहीं, देखो, Messi is good, has that point exactly. Messi is good, then you will have more strikers and midfielders. भाई देखिए, combined 11 में we will not put any team से more than 3 players. That's a rule we always do. You know that Messi is good. भाई आप constant watchers know that. तो 3 से ज्यादा, तो ये बात पक्की बोलता हूँ, Messi is good. Barcelona, as much as they had fantastic Puyol, he's one of the goats for me, in my personal opinion. लेकिन अगर चैंपियंस लीग फाइनल्स के परफॉर्मेंसेस पर बात कर रहे हो ना, आई थिंक दे वर बेटर चैंपियंस लीग फाइनल परफॉर्मेंसेस एज अ सेंटर बैक. मैं तो बोलूंगा, आई एम सरप्राइज दैट लूसियो के साथ नहीं जा रहे फतेह, तो इसलिए मैंने डाला है कार्वालियो पोर्टो वाला. ठीक है, पोल कर सकते हैं एब्सोल्युटली, लेकिन उससे भाई पूरे रात हम यही करते रहेंगे क्योंकि 11 लोग हमको करना है. लेकिन मैं पोल, आई विल कम बैक टू इट. ठीक है, आ जाएंगे. चेक और कोटवा में तो कमेंट्स क्लियर था भाई, चेक जा रहे थे लोग. मैं तो खुद कोटवा बोल रहा था, बीइंग अ चेल्सी फैन, फॉर पीपल हु माइट कम एंड से दैट आई एम बायस्ड. लेफ्ट बैक भाई, इफ एनीवन हैज अ से प्लीज टेल मी. मतलब मार्सेलो definitely has to be in the conversation. The kind of performances he's had. Marcelo, if you remember that Atletico Madrid match, extra time में उसने गोल भी मारा था. I know आप पहले देख लो डिफेंस, but I think Marcelo deserves a shout out. और आप अगर ये चाहते हो तो मार्सेलो को मैं माल्डिनी को लेफ्ट सेंटर बैक कर देते हैं. I think that makes more sense in my opinion. I actually feel that way. Yeah, because I always say that if a defenders manage to keep a clean sheet in a final, that's big. That is massive. So yeah, okay, भाई Ashley Cole, brilliant shout, absolutely अजिंक्य 100%. Then Maldini left back बोल रहे पुदिन. तो भाई लेफ्ट बैक में मतलब do we remember those left back finals? मतलब why are we overlooking Alphonso Davies? मतलब are we going easy on, because Bayern Munich ने बहुत dominate किया था, जो चीज हमने पुयोल के बारे में बोला. Alphonso Davies was the करता धरता of that team, bro. Recently. That team. Yeah. मतलब he was, wow, what a performances, set of performances he had, right? Yeah. लेकिन अगेन भाई आप लोग भूल रहे हो. आई वांट द कमेंट्स टू कम लाइक दिस. अजिंक्य बिग अप यार. आप लोग नाम बोलिए, आप लोग साल बोलिए, कौन सा यूसीएल फाइनल का. दिस इज अ यूसीएल फाइनल्स का कंबाइंड 11 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस. ठीक है एवरीवन, तो आप लोग साल भी बोलिए कौन सा. माल्डिनी फॉर एग्जांपल वी हैव पिक्ड फॉर 2003 because he was in his prime even then. तो मैं बोल रहा हूँ Maldini was brilliant in the 0-0 draw against Juventus and then we went on to win in the penalty shootout. Marcelo, I think there have been a couple of them, लेकिन 2014 का हम जा रहे हैं, रामोस और मार्सेलो.
ठीक Marcelo's है, been good. चेक 2012 राइट बैक, लेफ्ट बैक हमें कोई और नहीं याद आ रहा है अपार्ट फ्रॉम एशली कोल, मार्सेलो. आई थिंक मतलब एज मच एज एशली कोल बोलूंगा, मार्सेलो वाज. because हमने वो लिमिट कर दिया है, otherwise Roberto Carlos 98 2000 and then 2002 that cross to Zidane that went in. So he was ओ वो हमने क्योंकि वो टाइम ऐसे बैरियर लगा दिया है तो हम we can अच्छा भाई, 2013 में फिलिप लाम थे क्या? हाँ प्रॉब्ली थे ना. say, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट शाउट यार. डेफिनेटली I आई was थिंक also about दैट्स to talk about Philip Lahm and who else could be the right back. I used to Uh, love people might be love shocked, but Bosingwa for his ability did brilliantly in 2012. Just Come saying. on, man. I was thinking you were going to go with my favorite defender, Ivanovic. He missed the 2012 final. Na? That's Oh the yeah. whole point. People forget. आप लोग ठीक है, नहीं देखो तो लाइट में missed it. We were absolute non-favorites, bro. I know Yeah. people बोल रहे सिटी जीत जाएगी आराम से. भाई इंटर मिलान needs to take inspiration for such nights. Yeah. बोसिंगा for his ability. आप लोग ability पर नहीं पिक कर रहे हो. आप लोग कर रहे हो वो performance. बोसिंगा, जॉन ओबी मिकेल, डेविड लुइस, गैरी केहेल, Juan Mata, some brilliant performances on that night. I remember Ashley Cole, 6 brilliant performances. I remember Reece James, 2021 absolutely brilliant shout because I think he had Sterling in his pocket and उसके लिए Sterling join कर लिए Chelsea. Philip Lahm और Carvajal, लेकिन Carvajal I think is a good shout as well. I think considering Carvajal Oh क्या yeah. जो इंजरी प्रोनेस होती है, I think he did. In fact, मैं तो बोल दूंगा Carvajal in the last season's final also was absolutely sensational, bro. मतलब ये बिग शाउट आउट है. लेकिन उसको डालना नहीं बनता है. नहीं, सॉरी, आई एग्री विद दिस कमेंट. बेलेटी ऑफ बार्सिलोना मैन, ही वाज Yes. सेंसेशनल डूड. भाई अजिंक्य ओपी ब्रो, अजिंक्य Amazing, ओपी amazing, बड़ी amazing shout, man. Ajinkya. Yeah. What अमेजिंग. a बेलेटी हैंड्स डाउन. मतलब मायनो में कहीं ना कहीं बोलना चाहूंगा भाई, मिलान के फुल बैक्स आर आल्सो वेरी गुड एट टाइम्स, बट आई थिंक even Steve Finnan for Liverpool was very good. Let me tell you, he wasn't bad at all. People who know that. Lekin I think Belletti hands down gets it. Philip Lahm was a better player. He's won more, but Carvajal as well. Belletti में डाल रहा हूँ. मतलब Fateh, I think we'll go with that. What a performance in 2006. But then it was against 10 men, Ankit. ओके ओके. तो क्या हाँ, तब तो बोसिंगो भी बेटर थे. यू कैन हाँ आर्ग्यू दैट. ओ वाओ, दिस इज गेटिंग टफ. दिस इज गेटिंग टफ. एक सेकेंड. गैरी नेवेल, नहीं हम 1999 नहीं देख रहे पुदिन, हम देख रहे हैं एक सेकेंड. 2008 में कौन था? गैरी नेवेल ही था क्या हाँ राइट बैक? हाँ. But नहीं, आई डोंट नहीं रिमेंबर वो द नहीं, आप उसको नहीं डाल सेंसेशनल. सकते. It was not मैं sensational like he did. नहीं यार, मैं बेलेटी को ही दूंगा. मेरा Belletti ऑनेस्ट को ओपिनियन बेलेटी Yeah. डिजर्व्स इट. मतलब यू कैन आल्सो आर्ग्यू पुयोल कुड प्ले राइट बैक बाय द वे. Yeah, and लेकिन I was about to think about that कि एक Puyol. सेकंड, मेसी इज गुड. बारसा फैंस और फतेह, आपको मेमोरी अगर अच्छी है और आप गूगल भी कर सकते हो लोग. Did Puyol start in one of the finals as a right back? That's my big question. That one he won. No, Was that no. नौ में? By the time he was a centre back, by somewhere around 2003-4, he used to be a right back. Once Correct. Frank नहीं, लेकिन in Rijkaard the came in, he final was he a could centre have. back. You never know. No, but Yeah, once that's what I Frank mean. Rijkaard came in, उसके बाद से he became a centre back. भाई आई नो पीपल विल से भाई ये लाम को छोड़ते बेलेटी को क्यों लिया है, बोसिंगा को ले लेता और भी बेकार रहता. बेलेटी वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर आई थिंक फॉर अ कपल ऑफ सीजंस. वो था. एंड वी आर फॉरगेटिंग सम गुड फुल बैक्स फॉर श्योर. आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट. किसी को हाँ. याद आ रहा तो बोल Who सकते was हो. the वी आर जस्ट who गोइंग was बाय the मेमोरी. who was the Bayern Munich the Dortmund right back? Left back इट वाज दिस गाय Spencer ना, था. पिस्चेक क्या नाम था? अच्छा नहीं. द हाँ, पिस्चेक हो जाए भाई. पाउलो फरेरा पोर्टो के लिए. अरे बाप रे. नहीं. भाई ये तो डालूंगा मैं. अनुराग शाउट आउट भाई. पाउलो फरेरा आई थिंक वाज ब्रिलियंट फॉर इन 2004. एंड फॉर पोर्टो, फॉर पीपल हु आर वंडरिंग, इट्स नॉट फॉर चेल्सी. Dani Alves, but hands down, bro. Oh my how God. did we forget Exactly. Dani Alves? How can we forget? No, I think we'll have to put Dani Alves, man. 2011, हाँ भाई, सॉरी 2015. गाइस. आई नो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, बीइंग अ नॉस्टैल्जिक गाय दैट आई एम. That was not लेकिन आई a थिंक. very lethal Man U, though. I mean, I would अच्छा, not. डैनियल का Dani केस Alves. का क्या हुआ गाइस? इज इट सॉर्टेड? बिकॉज मैंने एक स्ट्रीम में बोला था विल नॉट पिक डैनियल अंटिल इट्स सॉर्टेड, सो आई डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन हाँ, आई डोंट थिंक ही वाज इन हिज प्राइम अजिंक्य इन दैट वेरी मैच, बट जनरली स्पीकिंग आई नो दैट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट. यू ऑल नो दैट. लेकिन पाउलो फरेरा और बेरेटी वेरी क्लोज सेकंड. बिग शाउट आउट यार पाउलो फरेरा 2004 में, क्योंकि कंसिडरिंग जो एबिलिटी है ना उसके हिसाब से दे overdid what they could. Even Bosingwa, people might be surprised, they overdid what. Puyol, he's miss. लेकिन वही है, वी आर नॉट पिकिंग हिम बिकॉज हमें लगता है माल्डिनी रामोस वर बेटर इन चैंपियंस लीग फाइनल.
I think it's a brilliant backline, yeah. Everyone agrees. कहीं ना कहीं अभी तक I would Brilliant. say it's been check. So Chelsea, AC Milan, you have obviously Barcelona and Real Madrid अभी तक. Everyone, अगर आप Yeah. मिडफील्डर्स दो लोग हैं भाई, अगर आप, मैं तो बोल रहा हूँ इंटर मिलान का प्लेयर नहीं है, इंटर मिलान फाइनल है भाई, स्नाइडर फॉर 2010 नहीं, No, I think Seedorf has to be there. सीड ऑफ, ठीक है, कौन Yeah. कौन से साल के लिए बोल रहे हो आप? 2007 Seedorf में था क्या? 2007 में भी था, 2007 नहीं, आई 2005 डोंट, में भी था, 2003 में भी था, 1998 में भी था, नहीं लेकिन और देखो, but he यहाँ पर was हम बात कर रहे हैं मिडफील्डर हु हैज बीन इफेक्टिव इन द गेम मोस्ट कंपेयर्ड टू in अदर that game. पीपल Okay, इन द so यूसीएल फाइनल्स. final. No, I would not put ये any तो मैं Inter लिख Milan. देता हूँ भाई. इफ एनीवन इज डिबेटिंग विद मी नो, माय मैन एंगोलो कांटे ऑफ 2021 अगर नहीं होता तो मैं अपना नाम बदल दूंगा भाई. ही ओन्ड मैन सिटी ब्रो, मैन सिटी Okay, का okay, ट्विटर but अकाउंट ने ट्वीट किया था. but Ankit, are you willing to put out the Real Madrid boys, Modric and Cruz? आई थिंक वन ऑफ देम डेफिनेटली डिजर्व्स, लेकिन जेरार्ड But why one of 2005. them? Gerard. Oh my God, yes. And नहीं, Gerard आई played आई right वुड back. से, या मतलब पीपल माइट फील दैट मैं बायस टू, बट इफ एनीवन इज टेलिंग हियर, जो एंगोलो कांटे का परफॉर्मेंस था 2021 में, इफ इट वाज But सिंगल हैंडेडली बेटर देन Ankit, एनीवन, आई मीन But एनीवन, एक डीएम के लिए. Gerard single-handedly took that Liverpool team from नहीं that नहीं, game against जेरार्ड इज अ, Olympiacos एक सेकंड, till जेरार्ड इज that द सेकंड final, गाई. हाँ, and आई then एग्री, yeah. जेरार्ड इज द सेकंड But गाई. then, मैं बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड मिडफील्डर्स के अगेंस्ट. but no, but तो जावी, come on, man. How can we put no, man? How can we go without Modric and Cruz? Come on, like how? I mean, what Kante does 1 year, Modric and Cruz are doing 4-5 years, man. नहीं, आई स्टिल फील दैट आई एम गोइंग, यहाँ पर थोड़ा सा वीटो कर रहा हूँ मेरे भाई. आई दैट वन परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट कैन बी द बेंचमार्क ऑफ अ चैंपियंस लीग फाइनल डीएम परफॉर्मेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट डीएम. एक बंदा प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, ठीक है, एंड वो है कांटे. इफ एनीवन इज टेलिंग मी दैट डीएम परफॉर्मेंस अगर किसी ने देखा है वो 90 मिनट जो कांटे ने किया था भाई, मैन सिटी के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया था भाई, कांटे के पास है बॉल, वो दे नहीं रहा है. एंगोलो कांटे 2021 में, इफ यू आर टेलिंग मी भाई ही वाजंट द बेस्ट, एंड बिग अप टू कैसेमीरो एज वेल. मैं बोल रहा हूँ इवन मोर देन मॉडरिच एंड क्रूज, मैं बोलूंगा कैसेमीरो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, अंडररेटेड Casemiro. परफॉर्मेंस था. वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत मुश्किल या हो जाएगा. एंड क्रूज इज अ कंट्रोलर. तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन इज नॉट अबाउट, देखिए एक अगर डीएम पिक करना है तो वी कैन हैव द कन्वर्सेशन, शुड इट बी अ गट्टूसो, शुड इट बी अ कैसेमीरो, शुड इट बी अ कांटे, दैट शुड बी द कन्वर्सेशन. दूसरा कन्वर्सेशन, शुड इट बी अ जेरार्ड, शुड इट बी अ क्रूज, और मॉडरिच could have played both the roles. That's the whole conversation we had about. But सब लोग हाँ, डैनी एल्वेस तो ऑलरेडी दिख दिया है मेरे भाई, आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन बाय द वे. लेकिन जेरार्ड प्लेड एज फॉल्स नाइन, मिडफील्ड, राइट तो बैक. इनिएस्टा और जावी को कहाँ डाल रहे हैं फिर हम? 2009, 2011, those passes, those goals, हाँ, तो 2015. यहाँ पर मैं सोच रहा था इनिएस्टा को डालेंगे. नहीं He तो could play फिर there. रॉबिन को कहाँ डालेंगे, उन दूसरों को कहाँ डालेंगे? ये तो अंकित, दिस इज ये तो फंस गए हम, बहुत गलत एक हमने सेकंड, टास्क लिया. रॉबिन व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम इन अ चैंपियंस लीग फाइनल ही प्लेड ऑन द राइट एनीवे. तो इनिएस्टा डेफिनेटली प्लेड लेफ्ट सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वेरी ऑफन, ठीक है, तो इनिएस्टा मेक सेंस वहां पर. लेकिन जावी एंड क्रूज और मॉडरिच को हम मिस आउट कर लिए, तो पीपल माइट क्वेश्चन अगेन, आई रिपीट माई सेल्फ गाइज, जो भी लोग देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड में फतेह मार रहा हूँ. देखिए सब लोग, आई एम नॉट पिकिंग people, or we are not picking as a team, you guys and the panel included, the players who are the best, who have won more Champions League finals. We are picking the one performance which was better than the other performance. Only UCL final के performance के बेस पर हम डाल रहे हैं. And yes, मैंने मेसी को बोल रहा था, मेसी और रोनाल्डो इस टीम को ओन कर रहे हैं. तो दिस इज द टीम, फतेह का आइडिया था, without Messi and Ronaldo, because they own the team. Messi and Ronaldo will be there absolutely. The people, we have lost it, I hope. लेकिन पिरलो 2007 ऑल्सो, लेकिन 2007 से भाई अगर इसको नहीं पिक करे तो भाई किसको? दैट परफॉर्मेंस, एवरीवन, इफ एनीवन इज, यहाँ पर कहीं ना कहीं आई नो पीपल माइट फील दैट मैं बहुत अपने फेवरेट प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ. फतेह प्लीज कमेंट. I know, but Ankit, again, I think काका को ना शैकल करके रखा था मास्चेरानो ने, who's a name we are forgetting. And when Mascherano came off in the 2007 game, that is when Kaka made the pass to Filippo Inzaghi. I remember it. But he did that. He did that, right? And 2005 में second half में Didi Hamann came on to shackle Kaka, and then that is how Liverpool came back into that game. So it's very difficult for me to put Kaka there and not put, you know,
because उसको कंट्रोल कर लिया था जब वो प्लेयर गया. Then Kaka made that pass, and that was a beautiful pass to Filippo Inzaghi. But I would not That put was the him there, difference maker, यार. That's the whole Ankit. But point. I would not put him there, man. I genuinely would ओ not. मैन, भाई मेरी और फतेह के पीछे लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर. भाई नहीं काका को नहीं डाल रहे हो? 2007 का अंकित, काका. तो इतने सारे प्लेयर हैं अभी जो अब हम जिनको सोचना है. हमने लैम्पार्ड 2008 या मैं लैम्पार्ड का फैन हूँ मेरे भाई. 2008 में लैम्पार्ड बोल दो, 2012 में लैम्पार्ड बोल दो. एब्सोल्युटली कैप्टन द हम टीम एज वेल. मुलर के बारे में नहीं सोचेंगे 2013 Muller, या हम yeah, 2013, absolutely. Even one would even बेल. left wing में there people are might. there are players like Bale that we have to think about, man. कहाँ किसको डालेंगे यार. मैं तो पागल हूँ. याद रखिए, हम यहाँ पर हम बात करें चैंपियंस लीग फाइनल की परफॉर्मेंस के बारे में. हाँ, हु वाज द हाँ. बेस्ट परफॉर्मेंस इन द चैंपियंस लीग फाइनल इन द लास्ट 20 इयर्स फॉर दैट पोजीशन. आप ये याद रखिए. और आप लोग बोलिए नाम. यहाँ याया टोरे कैसे बोल रहे हैं भाई? अनमोल सिंह मजाक कर रहे हो पता नहीं, लेकिन याया टोरे, हाँ ये बोल सकते हैं. याया टोरे ऑफ 2006 ही प्लेड एज अ सेंटर बैक. अनमोल, maybe if you are saying that, fair shout out आपको. 2006 में for Barcelona, याया टोरे started as center back in the final. एक Really? आज क्विक ट्रिविया. यस एब्सोल्युटली. लेकिन रोनाल्डो नहीं है मेरे भाई. मेसी इज गोट. कम ऑन भाई, 4 बार बोल जाओ यार, और रिपीट नहीं कर रहा भाई. रोनाल्डो मेसी ओन करे टीम को. दे आर एनीवे देयर. अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो मेसी, हु आर द बेस्ट people that you can remember in a See, Champions League final Ankit, performance? we can't put Ronaldinho there because final में it was Christian Eriksen, Henrik Larsson, and Balletti who came on and then changed the game. But Ronaldinho was shackled in that game. इसलिए we हमने can't- बेलेटी Yeah. को ऑलमोस्ट डाल भी दिया था. आई एग्री Yeah. विद यू एज मच एज. देखो ये गोट लेवल नहीं कर रहे. गोट लेवल में रोनाल्डिनियो होगा, लेकिन इसमें रोनाल्डिनियो नहीं है. यहाँ पर हमने इसलिए काका को मैंने डाला एटलीस्ट, क्योंकि 2007 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट केम फ्रॉम काका. ही वाज सेंसेशनल इवन इन दैट कैंपेन. वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स दैट आई हैव सीन एज Yeah. फॉर एनी कैंप. दैट्स हाउ Definitely, द लेवल यू आर definitely. टॉकिंग. That goal that he scored at Old Trafford, that where नो he, वन कैन फॉरगेट. ठीक Della है, and Heinze. Yeah. this yeah. is a good shout. People might feel मैं क्या फुक कर रहा हूँ भाई. डी मरिया got the man of the match in 2014 final. Ramos got the fans man of the match. डी मरिया को man of the match मिला था. People check your stats and you guys are right. Abhishek, brilliant shout. डी मरिया in 2014 final was a big shout out for right winger. 100%. सैमुअल एटू आएंगे. मेसी इज गुड, बट स्ट्राइकर पे हम लास्ट बात करेंगे. और वी कुड पुट अ सेकंड स्ट्राइकर, नॉट काका. People, we could put even a Shevchenko in place of Kaka, by the way. Shevchenko played that position as well at times. But in 2003 he didn't score. Penalty He didn't किया. score, but he scored a penalty, 2005 which doesn't count. Yeah. ठीक है. काका की जगह कोई और लेंगे अंकित हम. काका ज्यादा हो जाएगा. भाई एक I सेकंड. know. अरे I How am can we not have an AC Milan player here? एक सेकंड. आप अगर AC Milan का we player have का बोलो. Maldini, Ankit. See, I am not. I as an Inter Milan fan to be Attacking me, very in neutral. attack. मैं डाल ही नहीं रहा इंटर का कोई प्लेयर. अच्छा, निकालेंगे by the way, तो Kai Havertz could also play there. जोक नहीं है मुजाहिद. जोक नहीं है यार. Mason Mount in 2021 and Kai Havertz in 2021 फाइनल की बात कर रहे हैं भाई. बिग अप टू यू. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस. मेसन माउंट एंड Kai Havertz, व्हाई आरंट वी? भाई चेल्सी फैंस कहाँ हो मेरे? आ जाइए कमेंट्स में. मिलान फैंस कहाँ पर? मैं यहाँ पर माइनॉरिटी में हूँ. आ जाइए भाई सब लोग. हम रियल मैड्रिड के कोई अटैकिंग प्लेयर क्यों नहीं डाल रहे हैं? नेमार ऑफ 2015. यस. Yeah, I think Isco was there if I'm not wrong. He played in one of the finals in that role. Isco को shout out है. Yeah, again I'm just going by memory guys. जो हमने देखा मैंने फतेह ने in the last 20 years all the finals. I'm just going by that, people. That's why you guys are helping the chat. Neymar 2015 final was unstoppable. Yeah, I think Neymar is definitely there. So you know what? मतलब अगर आप चाह ही रहे हो भाई as much as, क्योंकि यार इतना कोई काका को बोला नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ. नहीं, तो काका भाई को डाल दो. अब मैं आई अंडरस्टैंड कि वो उस कैंपेन में all the things he did and he made that pass. तो काका yeah, why not? But he didn't score or assist, although he won the corner. He took the corner rather, which got the he got an assist. Yeah, technically it was an assist. You cannot exclude 5-time UCL winner performer Modric. नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं सौम्यदीप. ऐसे देखो, अगेन लेट मी रिमूव. यहाँ पर कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा. हम वोट लेवल नहीं कर रहे यार. People understand. Ankit, why is Iniesta there? कौन से फाइनल में he had the, well obviously he's great, but जैसे हम जैसे काका had that moment, that pass. हाँ, तो 2009 में इनिएस्टा का मोमेंट था ब्रो. मतलब you can argue the way in that campaign जो काका का हम बात किए थे 2009 में, it was he had a crazy campaign. Exact फाइनल में जो उसने कुछ किया हो जैसे. That's a good point. लेकिन again इसको is a good shout. I think तब तो मैं, to be honest, I agree with you.
काका का तो काका एटलीस्ट डाले। मोमेंट हम याद कर रहे हैं। तो गाइस नेमार को डाल दिया, इनिएस्टा नेमार दोनों को नहीं डालेंगे, नेमार का तो एवरीवन रिमेंबर्स अब प्रीटी श्योर। अब रॉबिन को डालना पड़ेगा बिकॉज 2013 रिडेम्पशन आर्क आफ्टर 2012। आई थिंक यहाँ पर बेल या रॉबिन। बेल, ओह माय गॉड, एग्जैक्टली, दिस इज डिफिकल्ट। एंड डी मारिया आल्सो 2014 like डी as मरिया, it was या mentioned. व्हाई नॉट। आई थिंक डी मरिया, गैरेथ बेल, आयन रॉबिन। भाई सब लोग खाली इन तीनों में कमेंट दीजिए। और राइट विंगर आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम मेसी जो हम काउंट नहीं कर रहे, रोनाल्डो ऑफ कोर्स। तो भाई सब लोग, आप इनिएस्टा could play right wing as well, that is a point, but What about Kaká Salah did, for Liverpool? yeah, साला फॉर लिवरपूल, वाओ। तो भाई चार लोग हैं। एक एक सेकंड, ये वाला एक पोल हो जाए, पोल डालेगा फतेह, ये वाला एक पोल डाल देते हैं। डालना पड़ेगा। भाई मेरा तो जवाब पॉपुलैरिटी हो जाएगा, रॉबिन के लिए कम वोट्स आएंगे यार। भाई गाइस वोट फॉर रॉबिन यार, वोट फॉर माय रॉबिन नहीं भाई। नहीं नहीं, मेरी ऑलमाइटी vote फैन, for- गो लेट्स वोट फॉर रॉबिन। लेकिन मुझे पता है गैरेथ बेल को मिलेंगे ज्यादा ज्यादा वोट्स, मुझे पता है। लेकिन कोई but नहीं, I think गैरेथ बेल हैड अ Robin सेंसेशनल has परफॉर्मेंस। played and lost a lot of finals, है ना? But he played well in all those finals. 2013 में, कम ऑन, द मोमेंट ही हैड, Yeah. आई थिंक। बट एनीवे आप लोग, मैं एक डालता हूँ। मैं भाई बहुत ही एक्सपर्टली मुझे डालना है कमेंट यहाँ पर। फतेह मैं क्या वर्ड करूँ इसको, पोल को? द बेस्ट, एक सेकंड मैं डाल रहा हूँ, एक Best सेकंड दीजिए wingers. फतेह मुझे। तो विच राइट विंगर हैज हैड द बेस्ट UCL final performance, right? Hmm. Final performance in the last 20 years. Are we forgetting? I'm sure we are forgetting pretty much many, right? और भाई मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे हैं। एक सेकेंड। मीनवाइल स्ट्राइकर का सब लोग कमेंट में स्पैम कर दीजिए भाई। हु हैज टू बी दैट वन स्ट्राइकर परफॉर्मेंस? आई वुड ऑब्वियसली से डीडी ड्रॉगबा, बट आप लोग बोलिए कौन है। यहाँ पर मीनवाइल मैं ऑप्शंस रख रहा हूँ। रॉबिन माय फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग रॉबिन के लिए वेट वर्ड करो। गैरेथ बेल डेफिनेटली डिजर्व्स, डी मरिया आल्सो डिजर्व्स, डी मरिया। तो रॉबिन 2013 या साल भी लिख रहा हूँ। गैरेथ बेल 2018 था क्या फतेह? And throughout that 2014। time Benzema तो था ही वहां पे। तो यहाँ पर 2014 का डी मरिया, राइट? और एक और हमने कौन सी बात की थी? साला ऑफ 2019, राइट? Yeah. Was it 19? हाँ, this is what. By the way, we didn't talk about Kingsley Coman. He can also be a shout out, लेकिन वही वही है। मैं सोचा when you said striker and Drogba, and I was like, why not Lewandowski? Why not Benzema? Why बहुत not? सारे नाम है यार, बहुत सारे। भाई सब लोग, मैंने डाल दिया है पोल, तो एवरीवन इन द चैट, नॉट ओनली लाइक द स्ट्रीम, भाई सब लोग, आई नीड एवरीवन टू वोट। तो इस पर मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मैं चाहता हूँ रॉबिन आ जाए। यू ऑल नो दैट बिकॉज आई थिंक आई लव रॉबिन, बट नॉट जस्ट दैट। 2013 में डिस्पाइट नॉट फॉर माई टाइम ही डिड इट। और डी मरिया को द मैन ऑफ द मैच इन 2014 फॉर पीपल डू नॉट नो एंड फॉर अ रीजन। गैरेथ बेल ने मारा था वो गोल, दैट सेंसेशनल गोल 2018 में। साला ऑब्वियसली हैड दैट परफॉर्मेंस 2019 में, दैट वन परफॉर्मेंस। अगर आपको लगता है कोई और होना चाहिए कमेंट करिए, लेकिन टॉक अबाउट द स्ट्राइकर। ओके, डेविड विया स्कोर्ड इन 2011, ओके, बट परफॉर्मेंस डीगो मिलिटो राइट अप देयर। आई एम सरप्राइज फतेह कि आपने बहुत ही कम इंटर प्लेयर्स I'm trying का not to नाम be लिया। biased ना, मैं तो बहुत एक्स्ट्रा ट्राई कर रहा हूँ कि कोई bias दैट नहीं डजंट आए। मीन बायस ब्रो। इंटर का जो 2010 में था, जो हमने बोला 2012 में, पीपल डिडंट एक्सपेक्ट इंटर टू विन द चैंपियंस लीग, राइट? डिड वी? And the At way that that you guys stage beat after Chelsea beating and Barcelona, because at yeah, after that, that right? Bayern was not ready, so we were the favorites that match. And the way That Mourinho was, match, हाँ, both yeah, Jose Mourinho, but Mourinho at generally that stage, speaking, it had, like, and we knew. I was also very confident that once Barca were done, then Mourinho was not going to lose to Van Gaal. yeah. But Benzema, which final? Bipin, which final are you talking? Did Benzema had a final to remember? Kai Havertz definitely in the conversation, 100% in the No, conversation. but No two last ways year about it. Benzema scored the goal, right? Or was it Vinicius? Vinicius, no? Vinicius ने Vinicius. मारा था, जहाँ तक मुझे याद है यार। वो तो pretty sure Vinicius को नहीं Vinicius. डाल रहे, हम नेमार को डाल रहे हैं। ओ भाई लड़ाई हो जाएगी यहाँ तो। एक सेकेंड भाई, चेक योर चार्ट्स मैन एवरीवन। हु हैड द बेटर? टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्नाइडर को बोला था, अजिंक्य, लेकिन
खुद फतेह ही बोल रहे जो इंटर फैन है कि यार फाइनल में इतना नहीं किया था स्नाइडर ने Matlab, कंपेयर टू pass व्हाट those. मिलिटो डिड. I understand the whole thing, but yeah, I mean, I think if there was one Inter player that I would consider, it would have to be Milito because he scored twice, and basically usi ne kiya wo that final that that's remembered for him. So definitely a very important performance. Drogba, you can say yes. Pippo Inzaghi 2007, 2008. I think there was no striker. I mean, we can't एक really. सेकंड, मैं भाई एक सेकंड, सब लोग वोट्स नहीं कर रहे हो क्या आप लोग? भाई गाइस, हैव यू गाइस नॉट वोटेड? आई हैव पुट अ पोल यार, एवरीवन पोल में गौर करिए सब लोग, लेट्स वोट. मैंने एक पोल डाला है, प्रीटी श्योर आई पुट अ पोल. एक सेकंड, मैं ट्राई कर रहा हूँ देखना रिफ्रेश करके. भाई एवरीवन इन द हाउस, जो भी लोग सुन रहे, पोल नहीं आया क्या आप लोग को? आई डोंट नो इफ यू गाइस आर नॉट एबल टू सी अ पोल. मैंने एक पोल डाला तो है यार. रॉबिन ऑफ 2013, डी मरिया ऑफ 2014, बेल ऑफ 2018 एंड साला 2019. आई पुट अ पोल. पता नहीं आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे. एनीवे, वोटेड ऑलरेडी. मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे फॉर व्हाटएवर रीजन. वोट नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड. अरे हाँ, तो भाई इट्स कमिंग टू मी. लेकिन हाँ, नेमार वाज स्पाइन ऑफ द टीम, इसलिए शायद हमने विनीशियस को नहीं लिया. और प्लस भाई 2011 वाले टीम से हम कैसे नहीं ले सकते यार. मतलब वी गिव एग्जांपल्स ऑफ 2011 बारसा ना, अटैकिंग वाइज. तो दैट्स द रीजन दैट वी हैव पुट नेमार एंड ऑफ कोर्स मेसी शुड हैव बीन देयर, यू कैन से. अनुभव तो बोल रहे हो रॉबिन. चलो भाई, इनिएस्टा वाज ब्रिलियंट इन 2 यूसीएल फाइनल्स 2009. मैं तो बोल ही रहा था इनिएस्टा मेसी इज गुड. मैं तो डालने को तैयार था, लेकिन आई थिंक यहाँ पर ज्यादा लोग ने बोला बिटवीन डाल देते इनिएस्टा एंड हैं, काका. इनिएस्टा डाल देते हैं, कोई चक्कर नहीं है. नहीं, लेकिन मैं आई कैन नॉट जस्ट गो बाय वन कमेंट ना. बाकी लोग बोल रहे भाई, जब मैं पूछा था क्वेश्चन, पीपल सेड काका ओवर इनिएस्टा, बिकॉज आई नो मुजाहिद बोल रहे थे इनिएस्टा, बट आई थिंक जब मैंने पूछा था, मे बी यू गाइज वर नॉट देयर एवरीवन, बट काका 2007 और इनिएस्टा ऑफ 2009, दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट आई हैव. इनिएस्टा बोल रहे. अगेन मैंने बहुत लोग पूछा था भाई, उससे ज़्यादा लोग. विनी ने गोल किया था. देखो, गोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. येस, ही वाज ब्रिलियंट, बट मतलब who was generally better in terms of the performance, ज़्यादा impact. Suarez 2015 in place of Kaka and Setu. This is a good shout. This is a good shout. You know what? I think probably I might have to let go my player, bro. Yeah, more than Iniesta. I think Suarez probably नहीं नहीं, wins it. ऐसे भी नहीं यार. नहीं, नेमार की जगह विल प्रॉब्ली हैव टू पुट विनीशियस जूनियर, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं अभी ज्वाइन किया ना, विनीशियस जूनियर हैज टू बी देयर. दिस मेक सेंस. कर देते हैं. Nobody is going to be happy anyway. या तो एनीवे, इनिएस्टा. चलो मैं तो इनिएस्टा को डाला, सब लोग इनिएस्टा बोल रहे हैं भाई बाद में. चलो Iniesta, I ये mean. फाइनल है, ठीक है. तो मैं चेंज नहीं कर रहा, लेफ्ट विंगर और कैम अभी चेंज नहीं कर रहा. आई लेट गो माय ओन प्लेयर काका ब्रो, रिमेंबर दैट. तो भाई मैं चेंज नहीं कर रहा, ये फाइनल है. इनिएस्टा को डाल दिए. मैं खुद डाला था भाई बीच में, मैं नाम भी लिख दिया था. व्हेन पीपल केम इन चैट एंड सेड काका रहना चाहिए, तो मैं चेंज कर दिया. आई एम लाइक ओके. तो चलो, अभी ज्यादा लोग इनिएस्टा बोल रहे हैं क्योंकि लेट जॉइन किया. राइट विंगर का वोट सब लोग करिए भाई. फॉर वॉट एवर रीजन मेरे वोट्स दिख नहीं रहे यार. Let's put Robin. I think let's put Robin because redemption arc and कहीं ना कहीं आप एक बायर्न म्यूनिख का रहना भी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज आई नो गैरेथ बेल वेरी वेरी क्लोज. आई वुड से क्राइटेरिया ये है, द परफॉर्मेंस इन अ चैंपियंस लीग फाइनल, व्हिच वाज अ बेटर परफॉर्मेंस इन वन चैंपियंस लीग फाइनल कंपेयर टू द अदर प्लेयर यू आर कंपेयरिंग इन द लास्ट 20 years. तो भाई रॉबिन इन 2013 इज व्हाट फतेह द पैनल इज अग्रीड, मैं खुद नहीं बोल रहा. तो दैट्स हाउ इट इज. इनिएस्टा को डाल दिए मेरे भाई. रिलैक्स रिलैक्स गाइस, वी हैव ऑलरेडी पुट. मुजाहिद तो बोल रहे मिलिटो, डिएगो मिलिटो. मैं तो बोल रहा हूँ ड्रॉगबा. मेरा है पीपल. देखिए यार, जस्ट बिकॉज द नेम अ चेल्सी और मिलान प्लेयर डजंट मीन आई एम बायस्ड. आई जेन्युइनली बिलीव जो ड्रॉगबा का फाइनल परफॉर्मेंस था, दैट इज द मतलब एग्जांपल ऑफ अ यूसीएल फाइनल चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस. but That but level का. Ankit, And but मिलिटो here का is भी the था deal. He didn't win it. He didn't win the game before penalties. ब्रो. The way that it happened, No, 89th I minute, understand. come I on. love it. I am just devil's advocate, like because you are saying Drogba, but then there are guys who are scoring a lot of goals. Like Benzema scored in many multiple finals. Milito scored in one final. Eto'o scored in नहीं. multiple So finals. again, the idea is not just about scoring goals. The guy But then, changed the game by himself. That moment, that entire 90 minutes or 120 minutes or be it penalty shoot or whatever,
जो सबसे ज्यादा impactful performance था ना UCL final, I think Milito and Drogba stand out in my personal opinion. ठीक है, definitely I would like to say a Shevchenko or an Inzaghi, or I would also like to say Benzema. 100% लेवेंडोव्स्की shout out. नहीं. Lewandowski, why not? Of course. जो 2020 में होता है, if I'm not wrong, 100%. Bobby Firmino 2019 में, shout out to him as well. Did Absolutely. Origi get the penalty? हाँ, मतलब generally speaking, who was the main man in the striker? Suarez was a brilliant Suarez. shout as well. By the way, why Suarez, not? yeah. So, of course, MSN wala Suarez, yeah, next I level. mean, Uh, he lost the final, but that goal that Mandzukic scored, I mean, we talk about Bale's goal, but Correct. Mandzukic's goal was also very good. Same, lost the final, but what start Crespo had in the Wow, 2005, brilliant shout brilliant. Ajinkya, Brilliant. man, awesome shout out man, Ajinkya. लेकिन आई थिंक मैं कमेंट्स के हिसाब से जा रहा हूँ, ड्रॉगबा एक वोट, दो, देखिए ड्रॉगबा, मिलिटो ड्रॉगबा के विषय देखते थे, 2-1 हो रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉगबा हाँ, ऑल्सो डिजर्व्ड. वो पेनल्टी भी दिया है, ड्रॉगबा ने रेड कार्ड भी लिया, मैंने सुना है. वो 2008 की बात है या 2012 की बात हो रही है, कम ऑन. कैंसिल हो गया अंकित, कैंसिल हो गया. हाँ, मिलिटो वाज अमेजिंग, आई थिंक. और भाई स्ट्राइकर का कमेंट दीजिए सब लोग, स्ट्राइकर सैमुअल एटू 2006. Yeah. But लेकिन then Henrik Larsson came in and changed that game, correct. as Thierry Henry always said, who was also a striker. Yeah, again people don't just go the That person impact scored. that, like when you say, okay, Drogba had that impact, Henrik Larsson also had that impact. Oh man, it pains me to do it, bro. I just did it. Ah, I just did it. Bhai, anyway, Inter are the finalists this year, so I just did it, bro. Oof. Scored in 2 finals, I agree, but doesn't matter. Brilliant performer, one of my favorite in terms of African strikers, along with Drogba, Vintage, and बहुत अच्छा performance था. लेकिन जो मिलिटो ने किया, and remember even in that game Etu was there by the way. Vintage good shout by the way. तो that was there. लेकिन मिलिटो का एक performance stands out. मतलब मिलिटो और ड्रॉगबा का दो UCL फाइनल परफॉर्मेंस यू कैन नॉट फॉरगेट एज अ स्ट्राइकर अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो. ऑल्सो बाय द वे, रोनाल्डो मेसी तो खैर है ही, लेकिन रोनाल्डो मेसी को हम डाल नहीं रहे बिकॉज दे विल ओन दिस टीम. तो भाई डीएम अभी चेक नहीं कर सकता मेरे भाई कृष्णा, प्लीज भाई 1 घंटे 50 मिनट से हम लाइव है, बहुत सारे कमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हो क्या चीज़ है, आप डेफिनेटली बोलिए मुझे. ड्रॉगबा केम ऑन यू योर चेल्स, अरे भाई क्या ही बोलूँ यार, मतलब सुआरेज एंड ड्रॉगबा एंड एटू आर वेरी क्लोज, लेकिन मैं बोलता हूँ मिलिटो. अगेन आप देखो तो भाई व्हाट अ टीम मैन. मिलिटो बीइंग एन इंटर मिलान प्लेयर, विनीशियस जूनियर बीइंग अ रियल मैड्रिड से कितने लोग हैं भाई, मार्सेलो, रामोस और विनीशियस, तो तीन का हमने रखा है, एंड दैट इज द मैक्स दैट वी कुड हैव पिक्ड. ठीक है, दैट इज वन रीजन आल्सो नॉट टू पिक बेंजेमा. That left back who you guys got from Atletico Madrid, who lost the 2014 final for Atletico. फिलिपे लुइस. Yeah, he was very good that year, na? या My God, yeah. Underrated. अच्छा, क्विकली काउंट कर रहा हूँ. डू यू हैव मोर देन 3 प्लेयर्स ऑफ बार्सिलोना? नॉट राइट. सो वी हैव डानी एल्वेस, वी हैव इनिएस्टा, दो ही है ना बार्सिलोना से. तो भाई वी हैव पुट डानी एल्वेस एंड इनिएस्टा. Messi owns this team. Again, for people who are joining late, might say that Messi Ronaldo kaise nahi hai, but that's how it is. Bayern Munich say we have a Iron Robin. Then Chelsea say you have a Cech and a Kante. Liverpool say Gerrard. AC Milan say very surprisingly only one player. By AC Milan are the second most successful team, but it is what it is. Maldini or yeah, I think that is about it. Wow, what a team यार, डाउनलोड करके रख रहा हूँ और मैं एंड करने वाला हूँ स्ट्रीम. एंड यस, वील कम टू द प्रेडिक्शंस बिफोर एंडिंग एज वेल. भाई which UCL final coach performance was the best, and अगर कैप्टन बनाना है इस टीम में से किसको बनाओगे? Everyone in the chat and panel. मैं तो I will still go with Benitez because he changed it at halftime. Brought in Haman and the game changed, because to take away a team's 3-0 lead is Gerrard. For me, Benitez and Gerrard both. What? Benitez and Gerrard both, मतलब coach Benitez, you're telling? Because he changed the game by bringing that substitution at halftime, that Haman thing, and then 3 goal वापस करना, मतलब Ankit, it's not easy. Like it's a very controversial opinion, but आप खुद सोचो, आप 3-0 से down हो half time में, आप change करते हो, and that changes the game. Again, मतलब we missed out on many people will ये debate तो end नहीं होगा भाई. We are talking about captain, तो भाई आ जाते हैं. Gerrard is a shout, Maldini definitely a shout, Ramos definitely a shout,
Czech also a shout I would like to say, as much as he didn't captain that team. Lampard was in the final. लेकिन I think जो एक माल्डीनी ने ये सारे ही shout हैं, ये they all can be captains. Yeah, I think to be honest, अगर मैं यहाँ पर मैं quickly बोलूँ तो I think I would not disagree with Fateh. 2005 because that is the greatest final, as much as I would like Comeback. to say Chelsea के दोनों finals भी, but Yeah. Thomas Tuchel shout out for sure, the way that he Shout did out. against Man City definite shout out है. लेकिन I think Benitez, as much as he's an ex Chelsea man, मुझे uncomfortable feeling आ रही है because of the rivalry during those times between Mourinho and Yeah. Benitez, but he deserves it. कोच So, हिम एंड कैप्टन आई थिंक माल्डीनी होना पड़ेगा. Come on. एक ही मेंबर लिया फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलान टीम्स एंड दैट गाय हैज टू बी कैप्टन इन माय ओपिनियन. लेकिन भाई अगेन आई एम टेलिंग यू वी हैव मिस्ड मेनी पीपल. भाई जो भी लोग बोल रहे ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था, डजंट मैटर. आप लोग वापस से देख सकते हो स्ट्रीम. इट इज अबाउट वन परफॉर्मेंस दैट ही हैड. वी हैव डन गोट स्ट्रीम्स. oh, उसमें Zinedine हमने लिया Zidane. जिडेन जिडान. जस्ट टू लेट यू ऑल नो, सौम्यदीप, he is one of my 5 times all-time greatest players. I've always said it, and not even a Real Madrid or a Juventus fan. मैं फिर भी बोल रहा But हूँ. ठीक है, मेरे as a coach, I think रोनाल्डिनियो that. as a coach. अच्छा, I think yes. You know what? Wow, this has to be the answer, bro. It's not Benitez. I know what. But see, Ankit, nobody had to face the kind of adversity that Benitez faced at that stage. Like for him to bring on Haman, to bring नहीं, on लेकिन those थ्री three. पीट इज नेक्स्ट लेवल ब्रो. यू नो व्हाट, वी आर गोइंग टू एंड द स्ट्रीम यार. ये तो फुल नाइट चलने वाला है भाई. यहाँ पर ये फाइनल My 11 है. vote would go to Benitez because मेरे को पता है 3-0 आपकी टीम नीचे है. आप जितना मर्जी जोर लगा लो हाफ टाइम टीम टॉक पे, it's very difficult. मतलब the way Milan were playing in that first 45 minutes and मतलब to change, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. Like can any other coach face that adversity and come back and win? Like चलो ठीक है, आई विल गिव इट यू. चलो भाई, yeah, तो जिडान थ्री पीट होकर, क्योंकि हमने ऐसे भी यार वी हैव पुट 3 रियल मैड्रिड प्लेयर्स इन द टीम एंड yeah, दैट्स व्हाई दे हैव गॉट इट एज मच yeah. एज जिडान डिड लॉट्स. आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है अजिंक्य और फतेह का. तो आई थिंक गोइंग विद बेनिटेस but not going with the Liverpool captain as well, going with the AC Milan captain Maldini, and I think he deserves it. At that age, he did that for AC Milan to win. But Ankit, let's end the stream, Fateh. ये पूरे रात चलता रहेगा. I want to yeah, end the stream in the next 2 minutes. but the irony कि इस बार भी final Istanbul में है and we've gone to the manager and the captain from that time. I mean, amazing. And we didn't plan this, Ankit. It's just come out like. Yeah, Pep also was brilliant, but I think we have to give Yeah. it to Benitez यार. भाई लेकिन जैसे बोला इस बार भी फाइनल इस्तांबुल में है. Again, within what 45 hours left now, Fateh. Oh my God. Quick prediction, everyone in the chat. Quick prediction, Fateh as a neutral and as a Inter fan, दोनों जल्दी से बोल दो. नहीं, दोनों मैं तो इंटर मिलान को जिता रहा हूँ. I know that I'll be in the minority, but I think we win. गलत बोलने वाला हूँ, but I think we'll win 2-0. वाओ. तो भाई 2-0. वाओ यार, था चेल्सी मैन सिटी भी इतना नहीं बोला था, बट यू नेवर नो. आई फील एज मच एज आई वुड वांट एन अंडरडॉग टू विन इट, एंड कहीं ना कहीं एसी मिलान का राइवल है, इंटर मिलान नहीं चाहता जीतना, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि यार मैन सिटी अगर जीते ना, आई थिंक इट विल बी वन ऑफ मेनी. आई जेन्युइनली बिलीव. तो मैं Yeah. ऑनेस्ट ओपिनियन यही है मेरा. थोड़ा सा ये है वेटेज कि यार इंटर मिलान जीते, इट भी मजा आएगा, थोड़ा शॉक हो मजा जाए आएगा. यूसीएल में भी, Yeah. बट नथिंग अगेंस्ट सिटी रियलिस्टिकली. लेकिन एज अ फुटबॉल वॉचर फॉर सो मेनी इयर्स, और जो देखा है पेप का जो सिटी का टीम ने जो किया है, आई रियली फील दैट इंटर विल गिव अ गुड फाइट, बट इट विल बी जैसे एफए कप में हुआ था ना फाइनल में, वैसे होगा. इट विल बी अ क्लोज गेम. आई थिंक आई एम गिविंग इंटर अ 2-1 लॉस. अनफॉर्चुनेटली सिटी आर विनिंग इट, बट बिग अप टू फतेह. एब्सोल्युटली बिग अप टू द चैट यार. One of the better streams that we've had recent times. If you guys like it, let's hit that like button as well. वो आपको देना पड़ेगा attendance, भाई. That is what helps the channel, as well as big up to everyone. Every member here, I couldn't give a shout out. Like, big up to them, big up to every sub who's joined, every comment, every person who voted as well. So, hi, bhai, sab log, remember, we are always a fan channel for all to see. We'll be back on the other channel as well. 2 दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए I wasn't there on Almighty Sports later today. That is obviously Friday, but even Saturday we will be doing the pre-match and watch along as well, and let's see if Fateh can be able to join. But Fateh, big up यार, all the best to you. बात Thank करेंगे you, हम man. लोग Thank you. बहुत सारा चीज, एंड मुजाहिद तो पूरे लुकाकू स्कोरिंग ब्रेस. लेट्स सी. चलो भाई, काफी लोग जा रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी. अरे क्लिफर्ड इन द हाउस, शाउट आउट है आपको जाते जाते. सी यू गाइस. लाइक बटन दबा देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर द शॉर्टर वीडियोस एज वेल.